Hello, hello, hello. Guys, welcome to the stream. I saw some. Hello. Can you guys hear me? Yeah, it's audible, it seems. Yeah, perfect, perfect. We'll be starting in a minute. Let me uh, get the notebook. यार ये मैकबुक साला अपडेट हो गया इसने चार बस इतना गंदा यूआई है ना यार चार नया यूआई डाला इमोजीज डाला और उसने 12 GB स्पेस खा लिया मेरे सिस्टम पे व्हाट द फक so yeah, this book, that is what we are referring to, and this is very nice book. Okay, so and the snapping mechanism is also changed. You know what the fuck is going on with the Apple? So there is a chapter in this one, design a rate limiter. Last time I felt that following a book is a very better option rather than starting with the scratch. Okay, so okay. Let me check the stream once, and if everything is okay, we'll start. कैसे बनी okay. uh, so this chapter, the designer rate limiter is nothing but it is a mechanism which is installed like a API gateway which gives the 429 error at the end, which is just too many request, which just says too many request. 429 too many requests is the goal of this whole project, whole rate limiter thing, and that is what we have to implement that. Okay, so let's read about it. uh, it's good कि अगर हम इस किताब को इसमें खोलें, open with the Chrome. Yeah, because on the Chrome we can do many more things. Yeah, Chrome is better. Here, rate limiter. Yeah, see this thing I wanted to read about this. We will go a little slow, okay? We'll not rush on the into the things. What it's saying, page marker. Page marker does not have access to the pages like the new tab. Da da da. Why so? Okay, no worries. This is the denial of service DOS attack, which is the most important part, type of attack that we can avoid while this. So let's read about it, and we'll design side by side and we'll start. Okay. So where I'm gonna write the notes, that is in the OneNote. Let me create a page for this so that I can share. I have seen that Excalidraw is like not so good because the notes get vanished after a while, and I think and OneNote for Mac is very bad. So I had to keep book. We'll name this as a rate limiter project. Okay, and whatever the brainstorming that we have to do, we will try to do inside here. Okay, can you give me thumbs up if anybody is in the chat listening to it right now? How can I close this tab? Page marker. There's no other way to close this. Uh, Let me. Okay. Mm, 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 mm. I will name it as architectural brainstorming, because code is just there will be two or hardly four files max to max. One will be the filter, one will be the service. I'll tell you as we go along the way.
The real thing is like what the mota thing that I have in mind. I have to refine on that. So what I have thought, I have like this project, for example, brainstorming. Okay. Can I use the shapes over here? There are no shapes. Okay, so fuck that. So for example, there is this. Uh, Par Sharma, hello, bro. Welcome to the stream. This is what you guys were asking, so this is it. For example, this is any of our project. The last project that we did was like URL shortener. Okay, so URL shortener is the project, and request uh, user request like through APIs. Okay, the API is like shorten API that we have. It calls this URL shortener directly, but while doing that, user has an opportunity to hit this same API multiple times or thousands of times using some kind of a bot. Okay, and this can literally literally make us make our database pay for the mistakes or the attack that the user is trying to do. And for that, I'm just explaining what I know right now. This is not the complete knowledge. It will improve as we go along the way. So this is the wrong thing. We should not let user to directly hit our server. So mostly in the companies there are some portals called API gateway. Okay, so there are API gateways such as the one that I have used in my experience is APG. If you guys have heard about it. APG, it is what I have used. It has many things. Right now we are just focused on the rate limiter. Okay, rate limiter. And then other side of this project will be our app will recite. Currently this we will use URL shortener to test this application. Okay, this the application. It is currently, for example, on the local host. It is running on port 8080. Okay, or in production it may be running on tiny URL. Okay, whatever the API is over here. Okay, and then users or client, will say client is over here. Okay, now the client will hit this. It will not hit URL shortener directly. So client may hit this multiple time, thousands of time, whatever be it is. Okay, but rate limiter will process it, only give the allowed number of these are like allowed number of request will be passed. So for this allowed number of request, the rate limiter will give 200 or 201, whatever be it, the status. Okay, that is means success status. For example, 10 requests are possible. First 10 request. Okay, first 10. अरे यार. So first 10 request. Okay, and after that, whatever user hits, the rate limiter will track it and send the user and says 429, bro, you need to stop. Okay, it will say 429, which is too many requests. It simply means too many requests, and itself is justified, like a self-explanatory error message. Okay, so this is what we have to send. Okay, then this is the overview of what we are gonna do. Okay, then there are like multiple things that I am not sure about how to use. There are things that I read that we have to use the Redis cache in between. Okay, somewhere here we have to use caching. Then there is the algorithm that we need to use. I'll explain you later in the stream that which algorithm for what. Right now I also don't know much. I know there are two algorithms. One is fixed. Currently we will work with the fixed algorithm. Okay, it will like a fixed window algorithm. Fixed
window algorithm, and then there is like another, the better way, which solves the issues that the fixed algorithm has, which is sliding window, the lead code problems that we solved for this a while ago. So sliding window algorithm, that will come along the way. Okay, and another thing that how I'm gonna build it, I'm gonna keep it as API gateway. Okay, API gateway, like it will be a another separate project in my Git repo. So its name will be rate limiter for now. I'm not gonna include many things because there will be no such instance in future that I'll have to use my own created rate limiter. No, there are companies which provide this kind of service much better, much faster, and much secure than us. So it's not always good approach to like invent the cycle. It is said that you should never invent the cycle. You should use whatever present best in the market. So we can use that. There are free alternatives, cheap alternatives as well, that we can have as per our requirement. But just for our understanding, just for our like learning purpose, we will do this. So this is the mota overview of it, what we are gonna build. Now the second thing is like I'll be referring to the book. I'm referring to the system design book by Alex Yu, because last time मेरे को इसका अच्छा लगा. Let's go. Yeah. I hope you guys understood. I try to keep it as simple as possible while explaining, because ज़्यादा भारी चीज़ें मैं खुद ही नहीं समझ पाता हूँ तो मैं आप लोगों को क्या बताऊँगा. तो दिस इज़ व्हाट बेसिक थिंग. ठीक है. द नेक्स्ट थिंग, यार ये स्नैपिंग बहुत ही चेंज हो गया इसका ना. मैकबुक पहले ही चूतिया था ओएस, और इसको अभी ये देखो. हाउ फकिंग stupid disgusting this is. Okay. I need a better PDF viewer so that I can have it. Okay. I have this. Okay, Apple is good at something at least. Uh, let's listen. Let's sorry, read about this part. The denial of service DOS attack. Okay, it can be asked in the interviews and all. So, do you want me to read this? Do you want me to read this, or it's okay? I'll just read the highlights of this. Okay, because मैंने यही पैराग्राफ पढ़ा है, उसके ऊपर मैंने भी ज़्यादा नहीं पढ़ा है. ठीक है. पेन कैसे काम करता है ये? कहाँ है पेन? Okay, is this? Yeah, good. Okay, in a network system, a rate limiter used to control the rate of traffic sent by the client or a service. That is what I have explained right now. Okay. In the HTTP world, a rate limiter limits the number of client requests allowed to be sent over a specified period. There is a period that we have to set. We can set all those things because it's our project. Why not? And then how many requests a client can set within that given period. Okay. If the API request counts exceeds the threshold defined, okay, by the rate limiter, all the excess calls are blocked. Those calls are blocked, and as I said, it will throw a 429 error. Okay, a user can write no more than 2 posts per second. These are some examples. Okay, you can create maximum 10 accounts per day from the IP address. You might have seen this type of errors, or have faced this kind of errors in the lead code that we were solving. You might have seen that if we try to click on submit twice, so lead code stops the operation and says too many requests in a given period of time. So that is what the rate limiting works. That is how a rate limiting works. In this chapter, you are asked to design a rate limiter. Yes, before starting the design, we first look at the benefits of using an API rate limiter. Okay, prevent resource starvation caused by denial of service DOS attack. Almost all APIs published by large tech companies enforce some form of rate limiting. For example, Twitter का ये कि एक दिन में 300 sorry ट्वीट्स 300 पर 3 आवर्स, मतलब 3 घंटे में 300 ही ट्वीट्स बना सकते हो.
का rate limiting है. Google Docs API have the following rate limit like 300 per user per 60 second for read request, something that they have Google Docs. A rate limiter prevents DOS attack. So let's read little bit about this DOS attack. So denial of service attack क्या है ये एक बार देख लेते हैं. Denial of service attack is malicious cyber attempt to make a server, website or network resource unavailable to legitimate users by overwhelming it with excessive traffic requests. A standard DOS attack typically originates from a single computer or a device. However, most major disruptions use distributed denial of service, like how we have the distributed applications, they have the distributed service to like for this DDoS attack, because there are IP tracking, there are multiple trackings. So attack which harness thousands of compromised devices, often a botnet, scattered across the globe to flood the target from multiple sources. सो इन बिटवीन द स्ट्रीम ना थोड़ा एंड में मैं एक मेरे कंपनी में खुद देखा हुआ डीडोस अटैक बताऊंगा कि कैसे हमारा एक एप्लीकेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, एंड थ्रू दैट एप्लीकेशन दे गॉट द एक्सेस ऑफ आवर मेजर इंपॉर्टेंट डेटा, एंड इट कॉज्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज. It was a very childish mistake, but yeah, it is this similar denial of DDoS attack, distributed denial of service, or like simple denial of service. Common methods include like volumetric attacks, clogs the system's bandwidth by sending massive amounts, protocol attacks, application layer attacks. देखिए क्या हिस्ट्री में ऐसा कौन सा, कैन यू टेल अस? हेलो हेलो अनिरुद्ध गेमर, अनिरुद्ध भाई, वेलकम to the stream again. Today's stream is more on the system design. I just explained you guys, if you guys have an option to uh, like move back and see this explanation, this is what we are going to build. So I just explained it, and I was reading about this from the book. I'm referring to this book I mentioned, Alexiou का book I'm referring, and then I'm reading about this. Now I'm little bit curious कि history में ऐसे कौन से अटैक हो गए. Can you tell me in history uh, this famous DOS or DDoS attacks that has happened? ये स्माइली वगैरह मेरे को ये नहीं, मुझे तो अच्छी लगी यूट्यूब में. हाँ, यू गाइज आर यूजिंग दिस, आई लाइक दिस हाई वाला. Hi, and then there are like snakes wala. Several historical DDoS attack, the pioneers early 2000, the Mafia Boy attack. A 15-year-old Canadian high schooler nicknamed Mafia Boy launched a series of DDoS attacks that took down massive e-commerce brands including CNN, eBay, Yahoo, and Amazon. The event caused an estimated 1.2 billion in economic damage and forced global governments to draft modern cybercrime laws. Okay. एक बच्चे ने किया भाई, 15 year old. बैक देन इन 2000s अपने इंडिया में कंप्यूटर्स, इंटरनेट कुछ भी नहीं था, एंड दे आर लाइक अटैक एंड ये सब चीज़ों में पहुंच गए. बोलते ही है कि वी आर लाइक बिहाइंड यूएसए बाय 50 years. Following a political dispute over a Soviet war monument, the entire nation Estonia was hit by a wave of DDoS attack. Oh, it completely paralyzed government networks, news portals, and national banking systems. This is widely regarded as the first major act of nation-state cyber warfare. Okay, मतलब हर एक जो evolution है ना, हम जो आज देख रहे हैं, all the system designs, kind of systems that we have, the robust systems, those are because of the past issues, past problems, or past attacks, the past vulnerabilities that has been identified by someone and exploited those vulnerabilities in the applications, and that's why we have the robust applications today. The Mirai Den attack utilized the Mirai malware to weaponize hundreds of thousands of insecure Internet of Things devices such as smart home cameras, routers, and massive botnet. डायरेक्ट अच्छा, ये तो गिटहब अटैक 2018.
GitHub was hit by a unprecedented 1.35 Tbps attack. Rather than using a botnet, attackers exploited vulnerable meme cached meme cache servers utilizing a flaw that amplified their attack traffic by a factor of 50,000. Bapre. Google Cloud attack 2020. Acha, it's very recent. Google's threat analysis group reported a prolonged UDP amplification campaign from threat actors that peaked at a massive 2.5 Tbps, remaining of the largest bandit. अच्छा ठीक है, there are मतलब so many. Microsoft Azure attack 2025. Okay, is it when the many Microsoft servers systems turned down और पूरा ट्रैफिक वगैरह ये हो गया, तो वही है क्या? Microsoft successfully neutralized a devastating cloud-based DDoS campaign aimed at a public IP endpoint in Australia. The multi-vector onslaught peaked at a colossal 15.72 terabits per second, 3.64 billion. अच्छा, maybe it is the recent one that we have been through. Now back to this. So what we need to build, let me see. This part we will read at the end because we haven't built it. These are like how we should practice it and how we should answer it during the interviews. That's why I really like this book. It is given like what candidates should ask, because the interviewer expect us the candidate should know this question. Candidate should ask these questions, and these are the questions that we should ask, like what kind of a rate limiter are we going to design? Does the rate limiter throttle API request based on IP or the user ID or other properties? ठीक है. What is the scale of the system? Will the system work in distributed environment? Okay, distributed environment होगा तो there will be different scenarios. Is the rate limiter is a separate service or should it be implemented in application? uh, API servers. This is our, I explained in very simple terms. These are the algorithms, token bucket, leaking bucket, ये सब हम देखेंगे आगे. ठीक है. तो let's start now. Okay, we have enough information to start the project, not to finish it, but at least to start it. Okay, so let me go. If I expand it, it's going into a new screen altogether. Yeah, the new, ये सब बदल गया है. So let's go to GitHub. Let's create a repository. Name it as rate limiter. Rate limiter ही रखते हैं ना. uh, it's a partial API gateway sample API gateway project which will help to block the excessive or overwhelming uh, number of requests from client, which can be intentional और अनइंटेंशनल. कुछ भी हो सकता है, मतलब क्लाइंट से इंटेंशनली हो सकता है, अनइंटेंशनली अटैक के थ्रू हो सकता है. मतलब उल्टा बोल दिया मैंने, बट यू गॉट द पॉइंट. ठीक है. अनइंटेंशनल. ओके, दिस इज व्हाट इट इज. रीडमी वगैरह वो हम ले लेते. रीडमी नहीं, रीडमी हम खुद बना लेंगे. और पब्लिक, एनीबडी वांट टू have this, see this, delete this, you can. Okay, now let's start. Let me open a new project. Let me create a folder. So in that one, the structure that we are always following is like the front end and back end. The which is better, that is better. So can I go here and do, no? Okay, I'll go in the projects. Let me
Spring Boot and Angular application, not this one. Auto recurring this. I'll create a new project, new folder. I'll name it as rate limiter. Okay, and in this one, I'll just open the terminal in this one, or maybe I'll open the anti-gravity. Anti-gravity is better. uh, Open folder, डॉक्यूमेंट्स यूआरएल शॉर्टनर था ये अपना, ये हमने कोडिंग के अंदर डाला है क्या? ये मूव नहीं करने देता मैकबुक में ना. सो नो वरीज, हम इसके अंदर एक फोल्डर बनाते हैं. कहाँ गया? कोडिंग प्रोजेक्ट्स, रिएक्ट नेटिव एंगुलर, ऑटो रिकरिंग पेमेंट, जावा लर्निंग, पेफ्लो. या इन दिस वन विल create a new folder and we'll name it as again rate limiter. वो बाहर वाला फोल्डर भूल जाओ, rate limiter. ठीक है. And in this one, open, and yes, trust bro, trust. I have huge trust in myself. And let's init git init initialized an empty git repository. Okay, and then get me this. Okay, let's follow the steps which are given over here. So did not match any files. अच्छा, रीडमी हमने किया ही नहीं है. ठीक है. echo readme.md. Let me add this file, readme.md. This sheet is working. Okay, don't show logs to this. Then अरे ये गड़बड़ हो गया ना फ्लो का, इधर ये चाहिए. And then we'll follow all these steps. Git first commit, then git add. What the branch name is? Main. Yeah. Then git add remote. It added remote, and git push origin main, so that we'll all set up. Paraphrase, अगर ये मैं भूल जाऊंगा तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए. Yes, it pushed. So let's refresh over here, and it should show the readme file. This sheet is working. Yes. भैया आपको कितने इयर्स का एक्सपीरियंस होगा? भैया अभी 5 साल हो गया है मेरे को एक्सपीरियंस जस्ट नाउ. बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत अलग अलग चीज़ों में, मैंने नो कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी काम किया है, फ्रंट एंड पे बहुत ज़्यादा काम किया है मैंने, बैक एंड पे बहुत कम काम किया हुआ था, वाइल डेटाबेस वगैरह पे किया था. हेलो भैया, आई एम गोइंग इनटू माय 4th ईयर बीटेक एंड आई एम स्टार्टिंग माय प्लेसमेंट जर्नी. आई वांट टू लर्न स्प्रिंग बूट. कैन यू गिव मी अ स्टेप बाय स्टेप रोड मैप फॉर लर्निंग इट? आई नो Java till collections. Java till collections is like you are still in the basic Java. Advanced Java में just enter किया है तुमने, ये मैं बोल सकता हूँ. तुम्हें और भी एडवांस जावा करना पड़ेगा. एंड देन स्प्रिंग बूट इज़ लाइक, अगर तुम्हारे कॉलेज में सिखाया होगा तो ठीक है, नहीं तो यू कैन रेफर टू माई स्ट्रीम्स. आई एम डूइंग the spring boot wala, so in this same playlist you can see that. But I'll suggest you, कल ही मैं बता रहा था, स्प्रिंग बूट इज़ डायरेक्टली अ फाइनल पॉलिश्ड लाइब्रेरी. इट्स अ फाइनल पॉलिश्ड प्रोडक्ट. बिफोर दैट जावा हैड मेनी थिंग्स, सर्वलेट्स, हाइबरनेट, देन स्प्रिंग बूट. सो यू शुड नो सर्वलेट्स वगैरह ये सब चीज़ें कि इंटरनल्स ऑफ स्प्रिंग बूट, बिकॉज स्प्रिंग बूट एट द एंड इज़ अ पैकेज ऑफ all those things that has been available in the past. The servlet, the hibernate is like uh, helps us like running this application bean creations. Okay, you can see on the terminal bean वगैरह, तो ये सब चीज़ें सीख लो. उसके बाद
स्प्रिंग बूट पे आना है एंड स्टार्ट विद द बेसिक, एकदम बेसिक बेसिक प्रोजेक्ट जो मैंने लास्ट प्रोजेक्ट किया था. यू कैन रेफर टू दैट. JWT ऑथेंटिकेशन, इट्स अ वेरी बेसिक, वेरी लॉगिन, मतलब लॉगिन करने का एप्लीकेशन है. इसमें यूज़र नेम पासवर्ड डालना है. यूज़र विल क्लिक लॉग इन and then create generates a token, stores the token, and whenever the user comes and refresh any page, then we'll log in through that token only. So that is very basic project, and that was also the first project that I built on Java, because I'm learning Java on this चैनल. आई डोंट हैव एनी जावा का पास्ट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. मैंने कॉलेज में किया था लेकिन यहाँ पे नहीं था. तो आई एम फॉलोइंग द सेम जर्नी. यू कैन सी दैट द पहला प्रोजेक्ट आई डिड JWT ऑथेंटिकेशन वाला, एंड इट गेव मी एन आइडिया कि हाउ द जावा इज वर्किंग, हाउ देर आर फिल्टर्स, हाउ फिल्टर्स वर्क, इंटरसेप्टर्स वर्क, कंट्रोलर्स वर्क, सर्विसेज वगैरह, ये सब चीज़ें. सो यू कैन रेफर टू दैट. ओके. And also give me tips for getting internships and placement. As a backend engineer, I'm learning AWS and will be learning Spring Boot. And what all technologies I should learn, please guide. I'm only telling you one thing because the same thing has worked for one of the subscriber. He came back and said that these things have worked. फोकस ऑन वन प्रोजेक्ट. एक अच्छा एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाओ. कोई भी मैनेजमेंट वगैरह ये सब जो कॉलेज में मोस्टली बनाते हैं. एज यू आर सिंग स्प्रिंग बूट, सो द बैक एंड विल बी इन द स्प्रिंग बूट. फ्रंट एंड का कोई टेक्नोलॉजी चूज कर लो, रिएक्ट, एंगुलर, एंड देन बिल्ड इट ब्रो. इतना अच्छे से बनाओ ना उसको. अच्छा मस्त डेटाबेस का डायग्राम बनाओ, EI डायग्राम वगैरह सब बना के एकदम छोटा बनाओ, लेकिन प्रॉपर तरीके से बनाओ. सब क्लासेस, it should follow the design patterns and all. Okay, it should be a clean neat project. और वो प्रोजेक्ट गिटहब पे ऐड करो. AI का कम से कम इस्तेमाल करके, AI सीखने के लिए यूज़ करो, कोड लिखने के लिए नहीं. एंड देन बिकॉज इट विल बी योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, एंड देन शो इट इन योर रेज्यूमे. इट विल बी सो मच हेल्पफुल. अगर तुमने वो प्रोजेक्ट अच्छे से किया ना, इन एंड आउट उसका, अगर तुमने खुद से बनाया, तो इंटरव्यूअर विल बी सो हैप्पी टू आस्क यू मोर क्वेश्चंस अबाउट दैट. बाकी सब चीज़ें करने से अच्छा एक प्रोजेक्ट कर लो. और AWS ये बोल रहे हो, उसको डिप्लॉय कर लो. 20 GB का AWS का EC2 इंस्टेंस मिलता है स्टूडेंट आईडी पे, तो वो यूज़ करके तुम बेसिक डॉकर इमेज बना के उसको उस टर्मिनल पे, उस कंप्यूटर पे जाके तुम डिप्लॉय कर सकते हो. बेसिक रखो, एकदम सिंपल, और बी एबल टू एक्सप्लेन दैट. आयुफ जायफा, हेलो हेलो ब्रदर, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो. सॉरी आई सॉ योर मैसेज लेट, ऊपर के मैं मैसेज पढ़ रहा था. लॉन्ग टाइम नो सी ब्रो. आयुष जायफा, भैया फ्रंट एंड में बहुत कंपनी आती है मेरे कॉलेज में, हाउ कैन आई मास्टर. फ्रंट एंड में तुम्हें मास्टर करने के लिए ज़्यादा कुछ जावास्क्रिप्ट तुम्हें अच्छे से आना चाहिए. फॉर फ्रंट एंड यू शुड बी रियली गुड एट जावास्क्रिप्ट. Whatever be the role, if it farly remotely uses JavaScript, then the interviewer asks you the JavaScript specific questions. उसमें वो तुम्हें ये सब चीज़ें पूछेगा कि बेसिक चीज़ें, उसमें बहुत सारी चीज़ें, होस्टिंग वगैरह ये सब. जावास्क्रिप्ट, यू शुड बी गुड एट जावास्क्रिप्ट. ठीक है. तुमने एक दो अच्छी चीज़ें बनाई हुई हो फ्रंट एंड में, मतलब एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट हो, तो दैट विल बी ऑलवेज गुड थिंग. जब भी गिटहब में डालो ना, वहाँ पे अपने रीडमी पेजेस में स्क्रीनशॉट वगैरह अटैच करो, ताकि इंटरव्यूअर तुम्हारे इंटरव्यू के दौरान वो लिंक खोलेगा ना, उसको रीडमी में ही पूरा दिख जाएगा कि तुम्हारा UI कैसे दिखता है क्या नहीं, क्योंकि वो रन करके तो नहीं देखेगा. तो वो उतना तुम अपना सेटअप करके रखो. प्लीज़ फोकस ऑन योर फुल स्टैक प्रोजेक्ट. अगर तुम लोग कॉलेज में हो तो एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाओ. तुम्हें खुद को अच्छा आइडिया आ जाएगा, पता है कि चीज़ें कैसे काम करती है, और तुम्हें कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा आ जाएगा. और भैया कितने टाइम लगेगा फ्रंट एंड करने में? यार ऐसे टाइम तुम्हें एक्सेल नहीं करना है. पहली बात तो तुम पहले एक ब्रेक पॉइंट लगा लो कि तुम्हें कितना करना है, व्हाट्स योर गोल. उसके बेसिस पे तुम डिसाइड कर सकते हो ना. आजकल चैट GPT वगैरह है ना, तुम्हें डिटेल में ये सब चीज़ें बता देगा. देर इज़ लाइक हैकर रैंक पे रिएक्ट के और इसके क्वेश्चन से, वो क्वेश्चंस अगर तुम कर लो ना, वो अच्छा, रिएक्ट एंगुलर का नहीं है उस पर, तो वो क्वेश्चंस अगर तुम कर लो तब भी अच्छा है फ्रंट एंड के. अगर तुम्हें ज़्यादा ही एक्सेल करना है फ्रंट एंड में तो दैट इज़ बेटर. बट स्टार्ट विद द बेसिक्स.
एक लॉगिन स्क्रीन वगैरह बनाओ, खुद से बनाओ, एआई की मदद लिए बिना बनाओ, ताकि तुम्हें पता चलेगा कि हाउ गुड यू आर और हाउ बैड यू आर इन दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड देन फ्रॉम ऑन टॉप ऑफ दैट ट्राई टू improve. How you will improve as a front end developer? You should know basic css वगैरह, कि how flex works, okay, how grid boxes work. अगर if the interviewer asks you to do something without using flex, without using grid, how would you do, and with using flex, okay. And learn how to debug the front end as well. Um there are ways. Chrome has very good extensions, not extensions but the inbuilt features, which you can use to like लर्न दैट. बट जावास्क्रिप्ट फर्स्ट, जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस कर लो, चैट जीपीटी को बोलो मेरे को इंटरव्यू में जैसे पूछते जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस वो कराओ. एंगुलर करना हो, तो उसकी लाइफ साइकिल सीख लो पूरा. देर आर लाइक 7 major life cycles of Angular. You should know how Angular follows that particular flow. ये सब चीज़ें कर लो, और कोई छोटा यूआई वगैरह बना लो, एक दो यूआई प्रैक्टिस कर लो, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा. उसके बाद तुम्हें खुद से पता चलेगा कि क्या करना है. एंड मोस्टली फॉलो द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फ्रंट एंड एंगुलर डॉक्यूमेंटेशन, या रिएक्ट कर रहे हो तो रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज फ्रंट एंड में डॉक्यूमेंटेशन से बढ़िया कुछ भी नहीं है. रिएक्ट का तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है. तुम उस पर लिटरली एग्जांपल्स ये कर सकते हो. जब मैं करता, हाँ, टिक टैक टो वाला एग्जांपल दे रखा है इन्होंने. इट इज़ वेरी गुड टू डू दिस. बहुत ही अच्छा है रिएक्ट का तो डॉक्यूमेंटेशन. ये तुम पिन करके रखो और ये पढ़ो इसको, कोई कोई चीज़ें. uh, let's start. Let me at least create the folders. So usually I'm keeping this as like a front end ka folder without complicating the things, because I can see people are looking into the repo, so I don't wanna make कि नाम दे दे के मैं उसको डिफ़िकल्ट बनाऊँ. ठीक है. और बैक एंड का मेरे को नहीं बनाना. बैक एंड का हम स्प्रिंग बना के उसको इंपोर्ट करेंगे. uh, तो अपने को स्प्रिंग इनिशियलाइजर लगेगा, और अपने को चार्ट जीपीटी का इंस्टेंस लगेगा, ask the questions and dependencies. So ठीक है, don't read my histories guys. I have seen. uh, एक मिनट. क्या करना था अपने को? स्प्रिंग इनिशियलाइजर, स्प्रिंग इनिशियलाइजर. क्या बोल रहे हो? और भैया कितना टाइम तो यार अपने ऊपर ही है. भैया, एज अ फ्रेशर डेवलपर लर्निंग वन और फुल स्टैक, विच विल बी a bulletproof option? Like if there is no chance in MNC, then startups will be an alternate option. अभी तुम्हें पता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. पता है द लेवल एट यू आर, लेवल एज इन द स्टेट दैट यू आर इन, यू नेवर नो कि विच विल बी योर फर्स्ट जॉब. सो डोंट वरी अबाउट इट विल बी, क्या बोलते हैं उसको, एमएनसी होगा या स्टार्टअप होगा. तुम्हें ये है कि मेरे को बस जाना है, 1 साल मस्त सीखना है, कोई भी मेरे को पहला चांस दे दे, मैं वहाँ पे जाके एक्सेल करूँगा. तो जावा फुल स्टैक और मन स्टैक, जो तुम्हें आसान जाए. जावा का मैं तुम्हें बताता हूँ, जावा के अभी भी बहुत ज़्यादा जॉब्स है. ठीक है. मन स्टैक इज़ लाइक नॉट been referred as मन स्टैक lately. there was a time मन स्टैक रेफर करते थे लोग कि मन स्टैक या मिन स्टैक. तो अभी वो थोड़ा सा ट्रेंड ऑफ है. जावा पे फोकस कर सकते हो, बिकॉज आई हैव सीन इन ऑन द नौकरी कि जावा की कीवर्ड्स पिकअप सो फास्ट. ओके. So I am starting on the rate limiter project, as you know. So I am on the Spring Initializer page. So give me require dependencies to have. Okay, so that we will resource for JavaScript. JavaScript के लिए मेरे पास कुछ था क्या, मैंने भी प्रिपेयर किया था. जावा लर्निंग है,
There is one more browser that I have, Spring JS Prep. ये एक रोड मैप है, ये मैंने बहुत पहले किया हुआ था। उसके बाद मैंने इंटरव्यू वीडियोस देखे थे शायद, एक सेकंड ना, अब याद नहीं मेरे को क्या किसका देखा था वीडियो। जावास्क्रिप्ट इंटरनल्स वगैरह, ये इतना जाने, ये मतलब ये सब चीज़ें ही पूछते हैं। ग्लोबल स्कोप क्या है ये तो ज़रूर पूछते हैं इंटरव्यू में। जावास्क्रिप्ट का अगर इंटरव्यू दे रहे हो ना, कि ऐसा फंक्शन दिया है, इसका स्कोप क्या होगा, ठीक है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ स्कोप्स, और कौन सा वेरिएबल कब कॉल होगा, अगर वेरिएबल मैंने इनिशियलाइज, क्योंकि जावास्क्रिप्ट अलग ही तरीके से रन होती है भाई, वो तुम्हें समझना बहुत ज़रूरी है अगर तुम जावास्क्रिप्ट में जा रहे हो तो। और क्या था यहाँ पे, फ्रंट एंड इंटरव्यू कोडिंग प्रॉब्लम्स, ये क्या था, हाँ, ये थोड़े से क्वेश्चंस थे, कुछ कुछ मैंने किए थे इसमें से बहुत पहले। और फिर फ्रंट एंड, ये क्या है, हाँ, फ्रंट एंड सिस्टम डिज़ाइन, यस। मैं बीच में एक कंपनी का इंटरव्यू दे रहा था, उसमें फ्रंट एंड माइक्रो फ्रंट एंड्स वगैरह, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत काम किया था एंड रिज्यूमे में डाला था, सो देयर पीपल वर आस्किंग, इंटरव्यूअर्स आस्किंग मी अबाउट दिस, सो आई डिड दिस। ये तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस लुक्स गुड, ये तुम कर सकते हो इसको रेफर। ये मतलब मैंने खुद किए हुए हैं तो मैं दे रहा हूँ, मेरे पास जो बुक मार्क थे, ठीक है। और ये वीडियो अच्छा है रिंदम का ना, इसमें क्या बोलते हैं, ये सब इंटरनल्स वगैरह दे रखे हैं, ये तुम देख सकते हो, या सिमिलर कोई भी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, इट्स सेइंग स्प्रिंग वेब रिक्वायर डिपेंडेंसी, या स्प्रिंग वेब तो हमेशा लगता है अपने को। सो जावा मैवन 4.1 एंड द आर्टिफैक्ट नेम वी विल कीप इट एज बैकएंड ही नाम दे रहे, ठीक है। जावा 21 डिपेंडेंसीज में स्प्रिंग वेब एक लगता है हमें अपने हमेशा। स्प्रिंग डेटा रेडिस रेडिस लगने वाला है, तो हम रेडिस भी इस बार डाल लेंगे। रेडिस सर्च क्वेरी, रेडिस का क्या था, ये एआई लिख के क्या आ रहा है इसमें, लेट्स सी। लॉम्बॉक नहीं यूज़ करेंगे। स्प्रिंग बूट डेव टूल्स वैलिडेशंस, स्प्रिंग बूट डेव टूल्स। और जेपीए कौन तेरा चाचा ऐड करेगा? स्प्रिंग डेटा जेपीए नहीं करना है। For this, you do not need Spring Data JP on day one. Use Redis as the main storage. तो Redis कैशे में ही सब स्टोर करना है क्या अपने को? So we will never need a database for this. मेरे शायद आंसर्स अच्छे नहीं लगेगा तुम लोगों को। Not never, but for the core limit rate limited database is not required. Think of Redis runtime, ठीक है। Redis पे ही हम करेंगे कमाल फिर। इतना ही करते हैं, और ये नहीं ऐड करते हैं, और जनरेट, एंड देन दिस इज देयर। सो नाउ let me open this documents coding java learning rate limiter, ठीक है। downloads this, and let me rename this to this, and let me open this, yeah,
and let me delete this, move to bin. ठीक है, and let me go to this. Yeah, backend folder आ गया अपना this. So let's commit this. This is actually initial setup. हो दीपालन की आंखें साका. So let's open the IntelliJ because उसमें ही अपना backend का काम होने वाला है. Front end के लिए we will use, yeah, allow bro IntelliJ. IntelliJ is bro. Open documents, coding, not this, Java learning, and then rate limiter, backend. Okay, open this window. Trust project. Okay, let's try and build the project first because we have committed this and it should work. Front end अभी अपन ने किया नहीं है. Startup builder. Hello bro, welcome to the stream. प्राइवेसी यस अलाउ. अरे ये मैंने अपडेट किया है तो ये साला सब कुछ अलाउ अलाउ बोल रहे हैं. हाँ ले ले बहनचोद, मेरा ही ये सब. चूतिया मैकबुक है भाई, कोई भी चीज़ में कहीं पे भी अपना आ जाता है इसका ईमान. ग्लास ये तो एकदम ही घटिया है भाई. यूआई क्यों मैंने अपडेट किया 12 GB का, इसके लिए मैंने 12 GB दिए. मेरा एक GB इसका साला 5-5 हज़ार का है. रीओपन कौन करेगा, रीओपन किया ही नहीं इसने. ये ऐप नहीं चाहिए मेरे को. आईफोन ही नहीं है अपने पास. अरे ओपन नहीं हो रहा है ये इंटेलिजे. Guys, please do like the stream so that the other people will know that I have started with this shit and they'll join because the initial I just started now. जो भी इनिशियल लोग हैं उनको लाइक करना पड़ता है, ये आप लोगों का मजबूरी है. That is how the newer people will find it out and the older people will know. Okay. अरे यार, application failed to start. Why there are application properties? To display condition evaluation, rerun the application with the debug enabled. Error. What's the error? But description parameter 0 of method vector store in Spring framework vector store Redis. अच्छा Redis configured नहीं है अपना. Redis vector auto configuration required a bean. अच्छा we haven't created the bean, so let me refer the older project that we have. No. Uh, Open. अच्छा इसने इसको भी अपडेट किया, ये अपडेटेड नहीं था. ओपन रिसेंट नहीं ऑप्शन गए यहाँ पे. URL shortener, new window, because there is like in the application properties हमने कुछ setup किया था application properties and then there is something for Redis. There is a bean for Redis. We need to add the bean.
there's nothing over here. So we need to add the bin for so this is what the beauty of the project bro guys. मैं कुछ फेक नहीं दिखाना चाहता कि एक प्रोजेक्ट शुरू करने में ही 10 चीज़ें हम अटक जाते हैं, 10 चीज़ों में अटकते हैं, कुछ चीज़ें सही होती है, कुछ गलत होती है, टू ट्राई एंड डू एरर हैंडलिंग और ये सब चीज़ें. सो ये हमने बनाया था रेडिस टेम्पलेट. ये कहाँ है स्ट्रिंग टेम्पलेट क्लास. तो हमें रेडिस का कहीं पे तो देना पड़ा था ना, कहीं पे कहीं से. ये माइग्रेशन से हमने डायरेक्ट ही ऐड किया था ना, कॉन्फ़िगर कुछ किया नहीं था इसमें. JDBC root URL shortener DB validate SQL dialect URL shortener enable flyway. It is for the migration, for database logging this, for log execution this and Spring this. हाँ Spring Redis port ये किया था शायद हमने ना, Redis Redis washroom. Hey, it is not a API application, you know. That's where the difference lies, because there is a parameter 0 of method this required type of bin embedded model. Let me ask this to AGY. Let me Google this error better. Dependency conflict between Spring AI Redis store. बिकॉज AI मैंने नोटिस किया है, AI क्यों लिखा हुआ था उसमें, इतने दिन हमने जो AI यूज़ नहीं किया था. डिफाइंड पाथ is this field parameter this. Let me search. कहीं से ये AI लाइब्रेरी नहीं है. required bin configuration store redis vector. There is no bin present, so I need to add a bin. What is, why this error? It will save us some time. साली आर्ट ये मैंने आज ही कहीं पढ़ा है, साली आर्ट या कुछ. व्हाट इज दैट ब्रो? स्टार्टअप बिल्डर, व्हाट इज दैट? Let me start a poll, quick poll. Have you guys seen my new Insta account? Because till now it was private. Rohit, एक second, I'm just starting the poll. You guys should reply to this poll. Okay, I talked to this couple of weeks ago. Java runtime exception, Redis error protocol, unauthenticated block. What it's saying? This because you have included Redis vector store starter in your POM when Spring Boot. हमने इसमें क्या इंक्लूड किया था फिर?
पुराने वाले में where is pom.xml, and in this one we had Redis. Where is the Redis? Go and search. भाई कितना रूडली बोला यार, गो एंड सर्च. Oh, it is your startup you are saying. Anirudh Sali. Is this you? The artist who color and canvas. Sold. What is sold collection? Oh, what is gallery? No paintings found. कुछ भी नहीं है. Is this what it is, bro? Saliart.shop. अच्छा, ये तुमने ऐसे, मेरे को लगा ये पेंटिंग्स वगैरह तुम बेचते हो कहीं पे. हमने रेडिस का क्या लिखा था यहाँ पे? स्प्रिंग कॉम एसक्यूएल, दिस स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट. वेयर इज द रेडिस? अच्छा, रेडिस इसमें एआई नहीं था ना. दिस इज द डिपेंडेंसी स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा रेडिस. अब क्या है अपना? अपने पॉम एक्सएमएल में क्या है यहाँ? ये वेक्टर आ गया ना इसमें. ये वेक्टर हमने यूज़ नहीं किया था यार. शो माई फर्स्ट वेबसाइट फॉर क्लाइंट, ऑल पेंटिंग सोल्ड. ओ नाइस, नाइस नाइस, बढ़िया. व्हेन स्प्रिंग बूट बूट्स अप, हमने ये नहीं यूज़ किया था. रेडिस वेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, रेडिस वेक्टर वेक्टर स्टोर बिन टू स्टोर एंड क्वेरी द डॉक्यूमेंट. लास्ट टाइम हमने एकदम ही सिंपल की वैल्यू वाला यूज़ किया था Redis. Now this is something new that we haven't used. A vector store needs to convert text into vector embeddings, which requires an embedding model bin. Since your project does not define or import any embedding model starter, Spring Boot's dependency injection fails. You can resolve this in one of the following ways. Option 1, add embedding model starter, recommended if you are using AI vector features. I don't think I need these things. मेरे को AI लिखा हुआ कुछ भी नहीं चाहिए. पता है, ये वेक्टर डेटाबेसेस आर फॉर द एआई मॉडल्स, एलएलएम मॉडल्स. जिसका डेटा, जैसे अपना डेटाबेस एसक्यूएल है, वैसा उनका वेक्टर डीबी है. वेक्टर डीबी में दे स्टोर दिस connections and all. So that is that kind of. But why we need this? mm, do we really need this for rate limiter application, or this is a mistake? I just need Redis cache, I guess. ये AI वगैरह का नहीं चाहिए. All the paintings sold. I read this message. That is what I know. This storing AI embeddings and performing similarity searches for rate limiting. You only need standard Redis. Yes. तो I'll do one thing. ये चैट जीपीटी ने अपने को गलत दिया. लास्ट टाइम हमने जो किया था विच वॉज करेक्ट. वी विल गो एंड, अबे यार,
we'll go and just change this to this. Okay. uh, ठीक है. Now we have to like wait and do mvm clean. क्या था उसका? mvm mvm clean install. mm, it worked. No, it didn't work. Let's see what's the issue now. अच्छा, it started, it didn't fail. Okay, it worked. ए चैट जीपीटी चूतिया, चैट जीपीटी बहनचोद, ये डिपेंडेंसी. स्प्रिंग वेब, स्प्रिंग डेटा, रेडिस. अच्छा, इसने नहीं दिया, हमने ही सर्च किया वो. हमने रेडिस सर्च किया और रेडिस का बस एआई ही दिख रहा है अपने को. स्प्रिंग फॉर रेडिस. हमने एआई का इंस्टॉल किया. जावा में भी लोग ये वेक्टर डेटाबेस यूज़ करके कर रहे हैं. मेरे को लगा जावास्क्रिप्ट और पाइथन में ही वो सब चीज़ें होती है, इसमें नहीं होती. ये चाहिए था. हम माय बैड ब्रो गाइड्स. हम हमरा से मिस्टेक हुआ. Spring Redis port is this 63379. So let me push these changes as a Redis setup. Redis setup. Commit and push. Yeah, commit and push anyway. Push, bro, push. Guys, please do like this stream, yaar. मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया है. इफ़ यू गाइज वांट एनी पॉइंट इन टाइम कि व्हाट वी आर डूइंग, आई हैव एक्सप्लेन दिस. It is a very brief overview, not a very detailed overview. So it's a very short overview, and I'm referring to the book. I'm saying this again and again. This is the book that I'm referring to, which is from the Alex Yu. It is a very good system design book because it has given key you should ask these questions during the interview. Okay. So this is nice. This is what simple architecture that I have explained. The simple use case of this is to do this too many requests. Client will send many API requests. We have to block that to the cache, Redis cache, and only the allowed number of requests will be passed to the rate limiter to the API server. Rest all will be blocked and responded with the status 429. And because of only this part, we are doing all this bakchodi. Oh, sorry. पुश फेल्ड. परमिशन. हाँ, चलना लौड़े. यहाँ से मेरे को पता है तू परमिशन नहीं देता. ये इसका इंटेलिजे का अपना ही कुछ लफड़ा है गिटहब के साथ मैकबुक में. देख, हो गया. चूतिया इंटेलिजे, चूतिया मैकबुक भाई. डेवलपमेंट के लिए कभी मैकबुक नहीं यूज़ करो भाई. कुछ भी करो ज़िंदगी में, मर जाओ, लेकिन मैकबुक डेवलपमेंट के लिए मत यूज़ करो. ढूंढते रह जाओगे कि क्या ये है. प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कंपाइलर में है प्रॉब्लम. क्या बोलते हैं, इसमें है इंटेलिजे में प्रॉब्लम है, मैकबुक में प्रॉब्लम है, या रिमोट में प्रॉब्लम है, खुद में ही प्रॉब्लम है. अगर तुम कोडिंग के लिए मैकबुक यूज़ कर रहे हो तो खुद में ही प्रॉब्लम है. दैट्स फॉर श्योर. नेक्स्ट, लेट मी go back to the one note and let me go a little deep inside कि अब हमें क्या चाहिए. So in this rate limiter, the things that I know, okay, I'll figure it out on the go, but the things that I know, it will be our project. Okay, it's like Spring Boot project that I created. Spring Boot project, and every request which comes, we learned in the last two projects building that, it goes to filters,
So from the filters, somehow we have to call a service. We'll name it as a rate limiter service. Rate limiter service. And this service will tell us is allowed. Okay, is allowed. If it's is allowed, then the service will go to the client, to the API server, which is in our case URL shortener. URL shortener. So this is our real API server. Actual API server. Okay, for this the port we will assign it is 8081 for this, because all everything is local right now, and for this we will assign 8080, which is the standard port. If not allowed, ठीक है, if yeah, not allowed, it will give two things. Okay, not allowed, and then we will send 429 to client. ठीक है, now what will this service should be? This service will have simple function that I don't know what should it will have, is like is allowed function. It will take the HTTP request and other only this parameter I'm guessing, HTTP request, and then we have something in the Redis. I don't know how the Redis is going to work over here. Redis just like a key and value pair पे हम कैसे खेलने वाले ये नहीं पता, ये मेरे को सीखना है, पता करना है. So that is the quest over here. But now the Redis, I'll inject the, अरे यार request क्यों लिख रहा हूँ, Redis in this service. Okay, so inject Redis and then get the Redis का this, and we have to add every request. Okay, we need to add the request जो भी उसका path है, maybe path, and count प्लस प्लस करना होगा जो भी पहले का count है उसका. ठीक है, if the count maybe exceeds allowed count, वो हम calculate करेंगे allowed count based on the time, then return false, and else return true. Okay, return true, then it will go to the filter, एंड फिल्टर में हम ये करेंगे. अभी अपने को ये पता करना है कि कौन सा टाइप का फिल्टर अपने को चाहिए. कौन सा टाइप का रेडिस चाहिए, क्या चाहिए. ठीक है, सो लेट मी आस्क, यहाँ पे इसमें दिया है क्या? नहीं, इसमें तो प्रोजेक्ट कैसे बनाना है वो नहीं दिया है. हाउ इट सिस्टम डिज़ाइन का ये बकेट फुल और ये एल्गोरिथम ये हम करेंगे मे बी ऑन डे 3 वी विल डू दैट. टुडे आज तो अपने को बस फिल्टर और सर्विस शायद हम ट्राई करते हैं उसको ये करने का. चार्ट जीपीटी को लेट मी आस्क which kind of filter I'll need here, which kind of a filter we will need here. Meanwhile, let me go to the my last project that I did to refer. So we don't have controllers and all right now. There is a filter. Did I use filter? हमने filter शायद JWT में extensively use किया था. Exception payload repository response URL exception handler, ये एक्सेप्शन हैंडलर है, एंड देर इज़ नो फिल्टर. हाँ, बिकॉज इसमें फ़िल्टर ही नहीं था तो मेरे को मेरा JWT वाला प्रोजेक्ट ओपन करना पड़ेगा. कहाँ था? यस, दिस प्रोजेक्ट, ओपन इन दिस विंडो. ओके, there are the security config. This is a filter, one kind of filter, security filter chain. It is like a chaining the request because the request will come through this, and ये था उसके लिए. अभी मैं ये फिर से explain नहीं करूँगा. ये कौन सा फिल्टर था? ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर था ये. इट इज़ नॉट अ फिल्टर, इट्स ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर. देन देर इज़ ऑथेंटिकेशन मैनेजर. हमें ऑन स्ट्रीम ही गौरव ने शायद बताया था कि यू शुड नो दिस थ्री थिंग्स. हाँ, एंड देन JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर. यस, this is kind of a filter that we had which extends once per request filter. JWT authentication filter, maybe this will have something new that we don't know. Let's see, let's get
the knowledge now. For this project, use a servlet filter first, especially once per request. Acha, it is the same once per request. That means it will run only one time for each and every request. Guys, please do like the stream, yaar. I'm forgetting to say this on the stream, but मेरे को stream खत्म होने के बाद पता चलता है यार, इतने लोगों ने देखा और like ही नहीं, मैंने बोला ही नहीं. So please do like the stream, yaar. If you guys are really interested in this, this is a literal system design second example project that we are doing. इसके पहले we did URL shortener and I got good response. मेरे को भी करके वो मज़ा आया. And we referred this Alex Hughes book and it was like very good explanation. I'm making a video, a short 5-6 minute of video about what I did over the 3 days, 2 hours session each. And then I'll explain in that. Okay, and it will be a good system design का example. उसमें ही क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं विच इज़ वेरी वेरी नाइस, आई लाइक्ड इट. सिमिलरली आई एम डूइंग दिस. इट इज़ थोड़ा सा मोर देन दैट, मोर देन द यूआरएल शॉर्टनर. ठीक है, सर्वलेट फर्स्ट. ठीक है, वंस पर रिक्वेस्ट. We have our own code, so why to do this? So we'll create this filter directly. ठीक है, once per this. तो कहाँ है अपना प्रोजेक्ट? फिल्टर हम किस में लिखते हैं? फिल्टर का एक फिल्टर फोल्डर है, तो Java backend, and here we will have a package called filter, and then we will have a Java class called what? Rate limiter filter, because एक पूरा प्रोजेक्ट ही फिल्टर के लॉजिक पे बेस्ड है भाई. क्या ही मज़ा आ जाएगा ये. हाँ भाई, ये डायलॉग का तुम मेरे को मीनिंग बताओ भाई. अगर मैं इंटेलिजे खोल के मेरे प्रोजेक्ट के अंदर एक फाइल बना रहा हूँ तो ऑफ कोर्स उसको गिट पे पोस्ट पुश करना होगा ना मेरे को. ये क्यों पूछता रहता है बार बार, मेरे को इसका कोई भी लॉजिक ही नहीं समझा. डू यू वांट टू ऐड फॉलोइंग फाइल टू गिट? यस ब्रो, ऐड. एंड इट्स सेइंग एक्सटेंड्स वंस पर. क्यों नहीं दे रहा सजेशन? वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर. ठीक है, लेट्स सी व्हाट्स देयर इनसाइड दिस फिल्टर. नो, do filter, yes, क्योंकि last time, the first time we just use it and make it work. The second time is the real time where we need to actually go in depth and learn how these things are working actually. So once per request filter extends generic filter bin. अच्छा, there is a bin inside here. Generic filter bin implements filter bin name aware. Okay, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, bin name वगैरह. अच्छा, bin initializer kind of a thing for environment. ठीक है, this is not important, this is important. Do filter public void do filter servlet request, servlet response, filter chain. filter chain अगर आ रहा है तो मेरे ख्याल से अभी filter chaining तो कुछ है नहीं यहाँ पे. if request instance of http servlet request this okay, that means we have to extend this method and return a new servlet. अच्छा, if there is an error, throw this servlet exception. Exception के लिए तो we have very good way to show. I'll manage that. So more action, implement methods. Yes, this method we have to implement. फिल्टर चेनिंग इज, इसमें भी नोड में भी हम यही करते थे. नोड पे मैंने एक इस पे किया था, उस पर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आता है. मतलब रिक्वेस्ट जैसे जैसे ये मिडलवेयर्स के थ्रू पास होता है उसको हम मैनिपुलेट करते हैं, जो भी डेटा चाहिए वो निकाल लेते हैं, जो भी चाहिए उसको हम आगे पास कर देते हैं, एंड इट गोज ऑन अहेड. सो यही कुछ है फिल्टर चेन. लेट्स, इसने दिया है अपने को गेट आईपी ऑफ अ यूज़र, check Redis, if limit exit, return 429, else continue request. All these things we will do inside a service. It's saying not this initially, don't start with a handler http interceptor. So working on project. Yes bro, Atharva. Just came here after ending stream 1 minute हुआ. अरे भाई nice यार.
कैसा रहा तुम्हारा दिन अथर्व? मैंने एक्सप्लेन किया तुम्हारे लिए, मैं बताना है तो बता सकता हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक कि तुम्हें अभी इसकी ज़रूरत है। दिस इज़ काइंड ऑफ अ रेट, काइंड ऑफ क्या रेट लिमिटर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फ्यूचर में तुम्हें ज़रूरत पड़ेगा तब आना वापस इस वीडियो पे। क्या क्या तुमने किया आज? आई पोस्टेड वन आई पोस्टेड वन दिस Q&A। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? वो परी वो अप्सरा, दिल नशी दिलरुबा, खो गई, हाँ खो गई, फिरता हूँ यहाँ वहाँ। somebody texted me on Instagram कि उसने रिक्वेस्ट किया मैसेज के लिए। मेरा अकाउंट बहुत टाइम तक प्राइवेट था। आई एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, ही सेड हेलो, आई रिप्लाइड हेलो, एंड ही गायब। ही वैनिश्ड। ऐसे दो तीन बार हुआ है मेरे साथ कि कोई स्ट्रीम से आके मेरे को लिंक्डइन पे हेलो कर दिया कि हेलो। मैं बोला हाँ भाई हेलो, बोलो। कुछ नहीं, हो गायब। बिकॉज इंस्टाग्राम, आई थिंक इट्स द बेटर वे टू कनेक्ट विथ ऑल यू गाइस। डिस्कॉर्ड कोई यूज़ नहीं कर रहा था, इवन दो डिस्कॉर्ड पे अपने 30-35 सम मेंबर्स हो गए, फिर डिस्कॉर्ड इज़ लाइक वेरी ड्राई। शाम का नाश्ता फिनिश कर लूँ, घर वाले आते ही होंगे, फिर बताता हूँ। ओके ओके। ठीक है कोई नहीं। टेक योर टाइम ब्रो, एंड डू लाइक द स्ट्रीम ब्रो। अथर्व, डू लाइक द स्ट्रीम। ये क्या बोलना चाह रहा है चैट जीपीटी? हैंडलर, इंटरसेप्टर, स्प्रिंग फिल्टर, एओपी, एनोटे। अरे मैंने एक चार्ट को ट्रेन किया था। जस्ट अ सेकेंड गाइज। तुम लोग मेरा हिस्ट्री देखोगे, मेरे हिस्ट्री में वो परी वो अप्सरा, दिल नशी दिलरुबा, खो गई। हाँ इसको, हाँ ये चार्ट को मैंने ट्रेन किया था। नॉट दिस, बिकॉज इसने कुछ भी थंबनेल बना के दिया। आई वाज ट्राइंग दैट। हाँ सो इन दिस वन मेरे को ये डाउट है कि दिस पार्ट विल बी इन द सर्विस। सो दिस इज माई फिल्टर। इसको अपडेट दे देते हैं। तो शायद इसके लिए ना हम एक सर्विस बना लेते हैं। ये सब चीज़ें हम सर्विस में करेंगे, तो लेट्स क्रिएट अ पैकेज service. Okay, and in this service we will add क्या नाम दे, इस प्यार को क्या नाम दे? रेट लिमिटर सर्विस। रेट लिमिटर सर्विस, it becomes at the rate service, that Spring Boot will know कि we have this service. Now is it right? Yes, this is correct place to start. The filter is your gateway pipeline request. हाँ हाँ ये पता चला मेरे को, ये मत बता। इसको हमें बताना पड़ेगा कि भाई हमें ऐसे इम्प्लीमेंट करना है। आई एम थिंकिंग ऑफ having this logic, business logic, having this business logic inside the service rather than in the filter, because filter का काम उसको बस filter chaining करके देना है, तो वही रखेंगे ना हम, उसको बाकी काम नहीं सौंपेंगे। तो यहाँ पे हम फिल्टर सर्विस, रेट लिमिटर सर्विस यूज़ करेंगे। इसके अंदर जाएंगे, फिल्टर के अंदर। आई गेस फिल्टर के अंदर सर्विस हम इंजेक्ट कर सकते हैं क्या? बिकॉज फिल्टर इज़ द वन विच गेट्स कॉल्ड once per request first, even before the controller, but I'm not sure कि is it before the service as well. Hmm, that I'm not sure कि before the service. Let me ask, is the Java filter gets called before
this service. Yes, Java servlet filter is called before the request reaches to the target component such as servlet or downstream business service. A filter intercepts incoming. अच्छा तो फिर हम कैसे सर्विस को इंजेक्ट करेंगे? So can I inject a service uh, inside filter? Yes you can. Okay, इतना ही चाहिए था अपने को. Yes you can. तो यस एग्जैक्टली द राइट डिसीजन. ओके, यही राइट डिसीजंस हमें बनाने हैं क्योंकि मेरे को कोड अच्छे से लिखना है, क्योंकि जावा आई एम जस्ट लर्निंग, आई एम वेरी न्यू टू ऑल दिस थिंग्स, सो दैट इज व्हाई आई हैव ऑल दिस क्वेश्चंस एंड ऑल दिस क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड सो दैट मेरे माइंड में सब क्लैरिटी आती जाए मेरे को, एनलाइटनमेंट. कल जो मेरे को बार बार बोल रहा था चैट में कि यार इसका प्रोजेक्ट करो, इसका प्रोजेक्ट करो, लीड कोड करते समय, द 1% इंजीनियर, क्या नाम था उसका, 1% इंजीनियर ही नाम था उसका, शुभम. ही डिडंट इवन ज्वाइन. उसने मेरे को 10 बार बोला कि ये प्रोजेक्ट करो, ये प्रोजेक्ट करो. व्हाट द फक. ये ज्ञान क्यों दे रहा है मेरे को फिर ट्रैफिक पुलिस और ये डिसीजन मेकर? अबे माल बता कहाँ है. Yes, this is what rate limiting service. This is the correct approach. Public rate limiter filter. This service equal to service. अच्छा ये कंस्ट्रक्टर है. अच्छा इसमें भी कंस्ट्रक्टर हम, हाँ ओके, इट्स क्लास एट द एंड. क्या ही मैं सोच रहा हूँ भाई. ठीक है, ये मेरे को थोड़ा सा दिस पार्ट, ये क्या है, फ्रॉम, ये नहीं पता है ना अपने को. रेट लिमिट रिक्वेस्ट फ्रॉम रिक्वेस्ट. अच्छा इट्स टेकिंग द रिक्वेस्ट एंड देन दिस आई हैड मेरे को थोड़ा थोड़ा भूख लग रहा है यार अभी. खाना नहीं खाया मैंने. तो अपने को ना जितना समझ रहा है उतना कर लेते हैं, बाकी देखते हैं. ठीक है, पहले तो अपने को ये सर्विस तो चाहिए यहाँ पे जो हमने रेट लिमिटर सर्विस बनाया. ये वही प्रोजेक्ट है या नहीं? हाँ यही है. तो रेट लिमिटर सर्विस public, it will not change final, and then rate limiter service, and yes constructor में will inject this. Now we want to have this request, we have this request, but it's saying convert, get this rate limit request. So rate limit request, what is this rate limit request? कहाँ से आ रहा है ये rate limit request? Is it something? रेट लिमिट रिक्वेस्ट कुछ है नहीं, उसने बोला है बनाने के लिए. लेट मी सी इसने क्या बोला है रेट लिमिट रिक्वेस्ट बनाने के लिए. क्रिएट एन रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट. अच्छा रेट लिमिट रिक्वेस्ट, इट्स सेइंग रिकॉर्ड. इट हैज़, हाँ अच्छा, क्लाइंट क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने को, पाथ, क्लाइंट आईपी, पाथ एंड मेथड. So let's create this. It's a DTO at the end, no? So I'll create a package called DTO, and inside this I'll simply not record Java record, it is Java record and rate limit request. And in this one we need क्या क्या चाहिए, string, client IP string होता है ये. क्लाइंट टाइप स्ट्रिंग के लिए, सब कुछ स्ट्रिंग ही लिया है उसने, और पाथ और मेथड.
स्ट्रिंग पाथ और स्ट्रिंग मेथड, ये मेरे को नहीं पता कि ये रेट लिमिट रिक्वेस्ट एक्शंस ऐड कंस्ट्रक्टर कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्टर कैनोनिकल कंस्ट्रक्टर, यस ठीक है। व्हाट्स द प्रॉब्लम उस import class रेट लिमिटर, और उसने क्या किया है, लेकिन उसने किया है ये rate limit request from, what is this from method? It is kind of a syntax that I don't know. Rate limit request dot from, there is no from for me. कुछ तो अलग किया एक, because a record it's a new thing in the Java that I never learned. It has extract client IP method. वो बाद में लेंगे। ए फक ऑफ प्रो, कीप इट सिंपल। यहाँ से ये लेंगे हम, और उसने क्या दिया था अपने को, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये रेट लिमिट रिजल्ट चेक रेट लिमिट, अच्छा ये सर्विस वाला मेथड है, तो अपने को सर्विस में वो मेथड चाहिए। सबसे पहले हम सर्विस का लॉजिक लिख लेते, जो हमने लॉजिक ये सोचा वो सही है क्या लॉजिक, काउंट और अलाउड काउंट के ज़्यादा। तो लेट्स सी द सर्विस। इसके लिए कोई अल्गोरिदम है, वो अपने को देखना पड़ेगा। सो हाउ शुड बी, बिकॉज दीज आर स्टैंडर्ड कोड्स हैं, ये हम खुद से नहीं बना रहे, तो वो ही अपने को फॉलो करना। हाउ शुड बी द रेट लिमिटर सर्विस मेथड इज अलाउड, यस। बकेट, बकेट हमने बनाया नहीं है, किताब में बोला है, लेकिन बकेट बनाने के लिए लेट मी रीड लिटिल बिट। नो मिसिंग वेयर टू पुट द रेट लिमिटर इंट्यूटिवली, ये पता है अपने को कहाँ पुट करना है। एपीआई allows 2 requests per second, client send 3 requests to the, and within the first 2 requests are allowed to API server. However, the rate limiter middleware throttles the third request and returns, yeah, that is confirmed. Cloud micro, while designing a rate limiter, an important question to ask ourselves is where should the rate limiter be implemented, on the server side? There are two ways, client side or server side, but client side कोई prefer नहीं करता। Algorithm for rate limiting, rate limiting can be implemented using different algorithms, and each of them has distinct pros and cons. Even though this chapter does not focus on algorithms, understanding them at a high level helps to choose the right algorithm and combination of algorithms to fit our purpose cases. Here is the list of popular algorithms. Let me see, ये मेरे को नोटिफिकेशन क्यों आ रहा है बार बार। ओके प्लीज़ गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम, बिकॉज ये एटलीस्ट 3 दिन का तो स्ट्रीम होगा, क्योंकि मैं 1.5 या 2 घंटे से ज़्यादा एक दिन में नहीं स्पेंड कर सकता। आई हैव जॉब टू कैच। Here is a list of popular algorithms. Token bucket leaking, ये token bucket क्या है? The token bucket algorithm is a widely used for rate limiting. It is simple, well understood, and commonly used by internet companies. Both Amazon and Stripe use this algorithm to throttle the APIs. The token bucket algorithm works as follows. A token bucket is a container that that has a predefined capacity. अरे ये highlight कर रहा है text. Predefined capacity tokens are put in the bucket at present rates periodically. Once the bucket is full, no more tokens are added. As shown in the figure, the token bucket capacity is 4. The refiller puts
The refiller puts two tokens into the bucket every second. Acha, once the bucket is full, extra token will overflow. Okay, okay, okay. It's a simple bucket analogy. Oh, okay. मस्त है यार ये, है ना? अरे, मतलब हर 2 सेकंड में the refill puts two tokens into the bucket every second. हर सेकंड में दो टोकन अंदर आ रहे हैं, मतलब बकेट का एक कैपेसिटी है इसका, इसका एक कैपेसिटी है। अरे, 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 इसका एक कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी होने के बाद वो जो भी आएगा वो 4 to 9 में जाएगा। अरे बकचोद साला, लिखने देना मेरे को। ओके, तो ये अल्गोरिदम काम कैसे करता है उसने बोला है कि मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, इट्स अ हाई लेवल बट वी अंडरस्टूड द एल्गोरिदम। Okay, this is how it should be. There is a refiller, there is a bucket, there is a refiller, request enough tokens. Okay, if the tokens, that many number of tokens are present, that many requests can be processed. Yes, forward the request, no, drop the request. How token consumption, refill and rate limiting logic works. In this example, the token bucket size is 4 and the refill rate is 4 per minute. Okay, for start with tokens, the request will, so अपने को एक bucket बनाना है, वो तो मेरे को समझ में आ गया कि एक बकेट बनाना है अपने को, बकेट का कैपेसिटी देना है, स्टार्ट विद द 4 टोकन्स। अभी ये क्या हाइलाइटर मोड में जा रहा है लौड़े, ये मत करना, ये कर, जो बोला वो कर। अबे साला, एक बकेट बनाएंगे, स्टार्ट विद दिस नंबर ऑफ टोकन्स, द रिक्वेस्ट विल गो थ्रू 1 टोकन कंज्यूम, ठीक है। आफ्टर 5 सेकेंड, start with the 3 tokens, all three requests will go through, 3 tokens are consumed, start with 0 token। ये क्या है मतलब, 1 1 आवर मतलब 0 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद दिस, 20 सेकेंड के बाद everything finish like, uh, so every 60 seconds four tokens are being added, 60 seconds, that is what it's saying. 4 tokens after refilled at 1 minute interval. Yeah, yeah, we understood it correctly. The token bucket algorithm takes two parameters: bucket size, the maximum number of tokens allowed in the bucket; refill rate, number of tokens put into the bucket; and how many tokens do we need. Okay, ये अपने को समझ में आ गया। अभी अपने को इसको कोड में कन्वर्ट करना है। This varies and it depends on the rate limiting rules. Here are the few examples. It is usually necessary to have different buckets for different API endpoints. हाँ, so every API endpoint will have its new bucket, just like the APG. APG में मतलब ऐसी bucket, पता नहीं मेरे को bucket होता है नहीं होता है, लेकिन there is a pipeline for each and every application and each and every API. For instance, if a user is allowed to make 1 post per second, add 150 friends per day, and like 5 posts per second, three buckets are required for each user. Yeah. So buckets, number of buckets. अबे यार ये अपना वन नोट ही बेटर है, कहाँ है वन नोट? देर इज दिस रूलर यू नो, ये एकदम मस्त सा है, इसको रोटेट कैसे करे भाई? हाउ टू रोटेट दिस? इसको रोटेट करने का तरीका क्या था? मैं बकचोदी करता हूँ बाकी, हाँ, असली काम छोड़ के। कुछ तो हुआ, ठीक है, मैं बाद में देखता हूँ, सॉरी। ये सब बकचोदी करने में मेरे को मज़ा आता है।
I'm saying. So bucket, so total number of buckets, टोटल नंबर जो इन्फॉर्मेशन अपने को पता चली है वो लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ बकेट्स इज इक्वल टू अवेलेबल APIs डायरेक्टली, ठीक है. तो मे बी देर कैन बी टाइप्स ऑफ बकेट विच कैन बी यूज्ड फॉर reusable buckets. I'm not sure about that right now. So we need to define tokens per minute per bucket, ठीक है. उस एग्जांपल में अपने को 4 दिया है, तो 4 टोकन्स हम ले सकते हैं, ठीक है. यही हम अगर कंटिन्यू करें, दैट इज़ व्हाट वी अंडरस्टूड. So for example, we start with 4 tokens, 1 2 3 4. Client send us first request, okay, it's like a queue I'm guessing. So first request गया, API सर्वर पे गया रिक्वेस्ट, API सर्वर वापस आया और उसने दिया 200 रिस्पॉन्स, ठीक है. सेकेंड रिक्वेस्ट गया, सेम, कम बैक 200. थर्ड रिक्वेस्ट सेम 200. फोर्थ 200, ठीक है, ये उधर भी गया. लेकिन नाउ वंस द फिफ्थ रिक्वेस्ट गोज, इट विल नॉट गो ओवर हियर, इट विल कम 429. सो विद इन 1 मिनट, अगर 1 मिनट के अंदर इफ द यूजर सेंड्स फिफ्थ रिक्वेस्ट विल बी ब्लॉक्ड. ओके, क्लैरिटी आती जा रही है धीरे 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 धीरे. वी आर गेटिंग द क्लैरिटी दैट वी नीड. नाउ जो अपने को गूगल ने बताया अल्गोरिदम विच इज़ करेक्ट एंड विच इज़ द फाइनल प्रोडक्ट, कहाँ गया वो, ई कहाँ गई. गूगल से कहाँ बात कर रहे थे हम, यहाँ बात कर रहे थे क्या. नहीं, ये मैकबुक में बहुत बकचोदी है यार, ये साला चूतिया पाना कब ख़त्म होगा पता नहीं मेरे को. कहाँ था ये, एक और यहाँ पे था, पता नहीं. इधर चला मैं उधर चला. अरे अपना चार्ट जीपीटी भी था उसमें इंस्टेंस. यू गाइज आर सेइंग समथिंग. नो, यू गाइज आर ब्लंट. फक, ये मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है मैकबुक का. अगर कोई मेरे को मैकबुक में अच्छा ओएस दे देना तो मैं उसको $1 मिलियन दूंगा भाई, कमा के दूंगा. है नहीं मेरे पास, लेकिन कमा के दूंगा, लेकिन दूंगा अगर मेरे को कोई मैकबुक का अच्छा ओएस बना के दे. ये देखो क्या, ये बोलते हैं कि मैकबुक ये नहीं होता है, देखो कितना हैंग हो रहा है ये. 32 GB रैम है बाय द वे मैकबुक की, ये नॉर्मल भी नहीं है. ये अटक गया, आया. अब ये कहाँ से आया, इतना ढूंढा हम लोगों ने. अच्छा, ठीक है, मेरे को मैकबुक चार्ज पे लगाने दो, एक सेकेंड. लैपटॉप चार्ज पे लगाने दो. सर्विस बना के ही छोड़ेंगे आज. तो इसने बोला है पब्लिक बकेट, अच्छा वो बकेट का ये कैश कंप्यूट इफ absent क्लाइंट की इज अलाउड. रिटर्न बकेट ट्राई कंज्यूम. बकेट कहाँ से आया, अच्छा क्रिएट बकेट. रिफिल, अब ये रिफिल क्या है, रिफिल इंटरवल. ओके, ये कहाँ से आ रहे रिफिल ऑब्जेक्ट. रिफिल इज लाइक गिटहब. अच्छा, बिट बकेट 4J, बकेट 4J हम नहीं यूज कर रहे दोस्त. सो वी नीड टू, इसलिए बकेट 4J यूज किया और कॉन्करेंट हैश मैप यूज किया, which makes very less sense. You are using one extended technology and one normal technology. So help me create a service over here. I read about the bucket logic and I think that's better to start with.
Hey there everyone. I hope you had a wonderful day. Yash Mishra, bhai, welcome to the stream. The OP OP Pokemon from the chat, the philosopher. Do you had a good day, bro? I hope you had a good day. Yash bhai, tell us something new. Tell us something new तुम्हारे लैंग्वेज में कोई मस्त सी चीज़ जिससे ऐसा एकदम दिमाग खुल जाए एकदम, मतलब मैं रात भर सो ही ना पाऊँ, ऐसा कुछ लिख दो कि मैं रात को सोच के मर जाऊँ कि भाई क्या लिखा था ये. Yes, bucket logic is better start than fixed window if your goal is to understand the real रेट लिमिट. हाँ, तो हमारा गोल रियल रेट लिमिटर करना है भाई, तो क्या करना, खिचड़ी थोड़ी बना रहे हैं हम यहाँ. स्टार्ट विद द टोकन बकेट में. अबे मेंटल मॉडल बहन चोद, कहीं का लॉजिक कहीं. ये है अपने पास. तो इसने क्या दिया है, ये रेट लिमिट रिजल्ट. अच्छा, वन इज रिक्वेस्ट एंड वन इज रिजल्ट. ओके, आई एम बाइंग दिस अलाउड और ब्लॉक्ड ट्रू and rate limit result pika pikachu. Yes. लाइट का नाटक शुरू हो गया है. लेकिन स्ट्रीम होम के बाद, स्ट्रीम होने के बाद, विच इज़ गुड ना. तुम तो बच गए, तुम्हारा आज का काम हो गया, ठीक है. आज का कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो गया तुम्हारा, तो तुम सूर्यास्त होने तक, सूर्योदय होने तक सो सकते हो आराम से. uh, this rate limiter is kind of a DTO and it is returning the rate limiter result, so it's a record. Okay, it will allowed, so if it's allowed then it is returning true capacity remaining tokens. क्या चल रहा है भैया. कल कल जो हम डिस्कस कर रहे थे ना रेट लिमिटर, तो हाँ आज हम यही बना रहे हैं रेट लिमिटर. अभी नेक्स्ट फ्यू स्ट्रीम्स विल बी ऑन दिस सिस्टम डिजाइन प्रॉब्लम. दिस इज द बुक दैट आई एम रेफरिंग. आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग you guys, I have shared this URL on the Insta and Discord, all the places I have shared. This is very good book. Rate limiter is the thing that we are designing, but अपने तरीके से बना रहे. It's a API gateway, part of a API gateway that usually used within the industries to keep an eye on the APIs and from the client, because not all the request goes. मैंने ये डायग्राम में एक्सप्लेन किया है भाई. Not all. अरे यार, because not all the request goes through the server, the main application server directly. It goes to an API gateway, and API gateway has lot many checks. क्लाइंट आईपी, क्या बोलते हैं उसका, कोटा कितना है, हाउ मच इज़ द कोटा लिमिट, देन बहुत सारी चीज़ होती है, सिक्योरिटी, उसके सब हेडर्स वगैरह, ये सब चेक करके इट पास ऑन द, सब कुछ सही होगा तो इट एक्चुअली पास ऑन टू द मेन सर्वर, सो दैट नो बडी कैन गेट द सर्वर एक्सेस डायरेक्टली विदाउट ऑल दिस थिंग्स. सो नो रिसेंट बुक्स. यार मैंने किया तो था ना अभी. दिस इज व्हाट इट इज. इंस्टा पे डीएम मैंने भी तुम्हें मैसेज किया भाई. मैं तुम्हारा ये बोल रहा था कि यार यू केम, you requested me for the message, I accepted your request, and you texted me, I texted you back, you didn't reply me, bro. कहाँ गया तुम्हारा अथर्व. या आई टेक्स्टेड यू. सी ब्रो, मेरे पे इल्ज़ाम मत लगाओ कि मैंने कुछ नहीं किया. आ, हाँ, तुम्हारा स्टेटस बताओ भाई कि तुम भी आज सॉल्व करने वाले थे प्रॉब्लम. ओके, सो
आज का समरी देना है स्ट्रीम का? हाँ दे दो यार, इट्स गुड। अगर तुम डेली दे रहे हो तो तुम्हारे लिए भी ये रिकॉर्ड रहेगा कि यस यू आर डूइंग। 4 तक जगह था, वही डीएसए किया, बोर होने लगा तो फिग्मा सीखा थोड़ा, और एन10 पे भी देख लिया, बहुत पहले सीखा था। नाइस नाइस, बढ़िया भाई। 4 बजे तक जगे, कितने प्रॉब्लम्स किए भाई फिर? यार मेरी मेहनत गई, मैंने यहाँ पे लिखा था सब कुछ। सिंक नहीं हुआ? रेट लिमिटर प्रोजेक्ट, यस है अपना। तो हाँ, लॉजिक बनाना है अपने को। तो कहाँ गया? AGY बेटर है, पता है, मैं फालतू में इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बट लेट्स सी, क्योंकि मेरे को सबका सब देखना है ना। चेक डिस्कॉर्ड ऑन लाइव, ओके। यार डिस्कॉर्ड पे ना ये हो रहा है सब कुछ ना, कोई एक्टिव नहीं है, तो इसलिए मैंने इंस्टा दिया है अभी, कि जिसको जो भी है इंस्टा पे सीधा मैसेज करो। क्योंकि डिस्कॉर्ड मैंने देखा है एक दो ही लोग गेम खेलने के लिए यूज़ करते हैं, बाकी कोई उसको एक्टिव नहीं करता। अरे मैंने कहा बोला, आपने इग्नोर। I cleared it from my side, bro. What should I do to be perceived as insignificant or something relevant? I just don't want to give anyone useless hope. She is not throwing the towel even after I have refused. Oh, bapre. What what should I do to be perceived as insignificant or something relevant? I just don't want to give anyone useless hope. She is not throwing the towel even after I have refused. लास्ट लाइन तो मेरे को समझा ही नहीं कुछ भी। 4 प्रॉब्लम्स कर दिए कर, अरे बहुत बढ़िया, नाइस यार। आई एम लाइकिंग ऑल दिस थिंग ना, कि तुम लोग भी ये टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ कर रहे हो, सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स और जो भी ये सब चीज़ें है, सो विच इज़ नाइस। कीप इट अप गाइज, बिकॉज द गोल इज़ टू ग्रो टुगेदर, लर्न टुगेदर। ये क्या है? रिलेशनशिप एडवाइस? ओ माय गॉड, DSA टू। ब्रो यू डोंट नो दिस गाय यश मिश्रा, ही इज़ लाइक, इसका इंग्लिश बहुत बढ़िया है, इंग्लिश में फिलोसॉफी बहुत बढ़िया है इसका। डोंट स्पेंड टू मच ऑन दैट, डोंट स्पेंड टू मच ऑन दैट, आई डोंट रियली केयर अबाउट दिस सिचुएशन। अब मैं आउट ऑफ स्कोप गया हूँ भाई, अब मेरे को नहीं समझ में। गाइस प्लीज डू लाइक द स्ट्रीम यार। The number of views and the number of likes really not matching quite up over here, so you guys are lacking so much in liking the stream. I'm not asking you to subscribe to the channel, please don't subscribe to the channel, just like the stream, that is what I'm asking for. अरे जनरल में बोल रहा हूँ, सर्वर चेक, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, आई मिस्ड। लेट मी ओपन द डिस्कॉर्ड। क्या मैं नहीं समझा? ये हिस्ट्री ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अच्छा ये अभिमन्यु ब्रह्मोस रेजोनेंस 64K, क्या है ये? मतलब ये इस बच्चे का कुछ है क्या? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। लैंग्वेज इज लैंग्वेज यूज टू कन्वे मैसेज। आई एम वर्किंग ऑन अ टाइपिंग साइट फॉर माई पर्सनल प्रोजेक्ट, I'll share it with you tomorrow maybe. Yeah, please, I'll be waiting. Language is language used to convey a message that, नहीं, language is like अगर तुम कोई लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है खुद में, और सामने वाले जो सुनते हैं ना, इफ़ यू आर स्पीकिंग इट वेरी वेल, दो इफ योर कम्युनिकेशन एंड वर्डिंग्स आर वेरी राइट ना, तो सामने वाला तुम्हें बहुत सीरियसली लेता है। तो परस्यू लैंग्वेज एज लाइक, कोई भी एक लैंग्वेज में जो भी तुम्हें, तुम डेली तुम्हारे वर्क प्लेस में या जहाँ पे भी हो बोलते हो, तो उसको अच्छे तरीके से यूज़ करना सीख लो।
ताकि है ना उसका फ़ायदा बहुत होता है, लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। तुम सेम अगर तुम अपने थॉट को अच्छे लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर पाओ सामने वाले को, विच इज़ गुड लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, तुमने आधी दुनिया जीत ली भाई इसमें ही. भाषेचं प्रभुत्व खूप गरजेचं आहे. कहाँ था मैं? कहाँ था मैं? इधर था मैं. हाँ, ये मैंने मेरे को नहीं समझा, ये समझा मेरे को अलाउड और ब्लॉक्ड वाला उसने ये किया, ट्रू और फॉल्स करके रिट्राई आफ्टर सेकेंड्स वगैरह. क्रिएट सर्विस इंटरफेस. अय्यो देवा. इंटरफेस वाला हम ये करेंगे. ठीक है. रेट लिमिट चेक. तो लेट मी फर्स्ट क्रिएट द सर्विस इंटरफेस. सो सर्विस में ही अभी अपने पास ये नहीं है, तो आई क्रिएट a जावा क्लास इंटरफेस. I'll name it as I service, I rate limiter service, and then in this one we will have this check rate limit request check. ओके, और ये रिटर्न करेगा रेट लिमिट. इट विल रिटर्न द रेट लिमिट रिक्वेस्ट इटसेल्फ. तो ये अभी अपने पास नहीं है बना हुआ, तो रेट लिमिट रिजल्ट डीटीओ में ही हम बनाएंगे रेट लिमिट रिकॉर्ड. ठीक है, वी हैव एक्टिवली स्टार्टेड यूजिंग द रिकॉर्ड्स नाउ. एंड व्हाट डज दिस रेट लिमिट रिकॉर्ड शुड हैव? It should have, this is the request, this is the result. I Yeah, result. So all these things is allowed, capacity, remaining tokens and retry after seconds. So सबसे important boolean allowed. अभी ये अपने को लिंक नहीं हो रहा, लेकिन एक बार पूरा बन जाएगा ना तो अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगा. ठीक है. सो डोंट वरी गाइस, मैं धीरे धीरे सब जैसे जैसे मेरे को समझ में आएगा मैं बता भी दूंगा. सो डोंट वरी about this. Canonical constructor is what we want. ठीक है. And then the result. अच्छा, रिजल्ट में इसने क्या किया है कि दो ये बनाए हुए, तो इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे को देखा जाए तो. कंस्ट्रक्टर इज़ नॉट रिक्वायर्ड. और सो मेनी मैसेजेस कहाँ तक पढ़ा था मैंने? डोंट स्पेंड. अरे जनरल में बोल रहा हूँ. आई एम वर्किंग ऑन टाइपिंग. ये मैंने पढ़ा. दैट वाजंट सिंपल. 7.5 years old. Okay, I guess we gonna sit at home more. 7.5-year old. Okay. Harkirat's recent video was really demotivating. हाँ क्या? You get me right. These kids are just dominating robots. Today revisited two problems and did two new problems. Total 3 plus 3 hour ka yes stream. Nice. Also in the first revisit did it with two approaches. 7.5 साल का बच्चा ये सब 7.5 साल का बच्चा ये सब पढ़ रहा है. जेनजी लोग. अभी ये जेनजी नहीं है भाई, ये जेन अल्फा है. जेनजी बुढ़े हो गए. यू डोंट नो. जेनजी अभी 25 to 30 के एज में है. हरकिरत का मेरे को नोटिफिकेशन तो हाँ यही था ना. यही है क्या? क्यों डिमोटिवेटिंग है ये? देखूँ क्या मैं थोड़ा सा? इफ़ यू गाइज कैन अलाउ मी, शुड आई वॉच इट? मेटा का तो चल ही रहा है भाई, वो बहुत टाइम से ही उड़ा रहा है.
search of a new type of engineer. What is the difference between them? I've gathered a bunch of data from the internet and along with my connections with companies and understanding how they're hiring engineers and what an engineer is doing on a day-to-day basis. This Up video to I you. want to talk Okay. about. If you're starting from zero, or even if you're like a beginner to mid-size engineer right now, End of CRUD developer. let's get right into it. The first point I'm going to talk about is the end of a CRUD developer. This basically starts off in 2021, where a little bit of TSA, maybe some dev and projects, and you're good to go to provide value to a company because the bottleneck for a company would have manual labor to do a bunch of things. Eventually, industrial systems came into the picture, and now we have orchestrators that move machines, but have people picking mud through their hand. Unfortunately, software engineering looks very similar. What we used to do 5 years ago now sounds very primitive, and if anything, it feels like over the last 15 years, the engineering output where to eventually train better llama models or probably work with the other labs. Either way, they're now one of the ठीक है, only ये labs समझ that गया. can talk Tokens about measured this. as per part of perf. So devs aggressively optimize. So yeah. But ये पता है ये प्रॉब्लम आने वाला है. There's going to be a problem that the number of tokens, the amount of tokens, and the pricing of these tokens. These tokens are really expensive. If you guys are not sure about this, the tokens are really expensive. If the company has, there is something going on within the Microsoft company. The company has its own Copilot, but the Claude was so good that the company gave them the employees the access of Claude, but the uh, billing of that Claude increased for all of the employees, and employees stopped using Copilot and started using the Claude. So that is something uh, which company like Microsoft can afford, but they even stopped that and they asked them to move back to the Copilot. But ये टोकन का आने वाला है. मैं टोकन पे भी एक This अच्छा happened with वीडियो Meta बना रहा in हूँ. 2021. टाइम लगेगा, They इसमें launched आएगा. यू विल Redis-Based गाइस नो. technology. This part feels a bit weird to me, but unfortunately, टोकन्स a lot of टोकन्स हर companies जगह. people Everywhere you are like tokens सब कुछ. I'll give you guys a good video on this token so you will guys understand this situation is scary but not that scary that people are making out of it. I'm sure there's a product that will come out eventually that actually tracks real productivity compared to token maxing. See, encouraging token maxing as I wrote. Nonetheless, it is obvious that engineering leaders feel people who are using more AI are going to be better engineers compared to the ones that aren't. Here is a graph from interviewing.io, which is a company where people come and interview with ex and meta engineers. And सब जेंजी के सही ही हो रहा है क्या? Why not? you can see the number of people from Meta that signed up as interviewers on this platform has spiked in April around the time that the layoffs Massive jump. finished. This is a specific example of Meta, but assume all of this is going to roll over to most companies. You expand. These are all US-based companies. Again, the data that I gathered from only had US companies. But from my conversations with a bunch of engineers, in fact, yesterday someone from the last 30 batch, one of the better students who did not get placed, got an offer from a Bangalore-based startup called Emergent, which is sort of the few AI companies from India that's doing well. NVIDIA is another one. So they're like you can like count. That is why I'm telling you, all of you guys, if you guys are listening, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू बी ओवर हियर कि तुम लोगों को लग रहा होगा कि इस बंदे को 5 साल का एक्सपीरियंस है, इज़ इन अ फ्रंट एंड, सो वाई इज लर्निंग द जावा or learning the spring boot or doing the lead code again and all of these things and doing system design because when I started these things didn't really matter. Okay, the architect who had the experience of almost 15-20 years, he used to take care of all of these things. But now the things have really changed. The architect never used to look into the code or had no idea what the developers are writing code level, but he used to knew ki what features are being developed and all. But now the level of understanding has been the gap of level of understanding between a new developer and 20 years of experience like an architect has been reduced so much so that architect can even go and write the code and developer can go and design the system, but the difference will be still there. Like developer cannot design a good system and architect cannot write a good code. तो उसके लिए है ना, बट कंपनीज विल थिंक कि वाई शुड आई पे एन आर्किटेक्ट सो मच सो कि बिकॉज डेवलपर का जो काम है वो को पायलट ए आईज करके दे रहे हैं. सो को पायलट ए आईज आर राइटिंग द कोड.
So what would be the developer's new job then? So developer's new job is to like look more into the systems. So systems का knowledge होना, system design करना, जो भी issues आते हैं end to end, you should be able to do that. So companies will happy to relieve the other people who are like into only front end or who are only into back end or who are only into DevOps. Companies no more want such people. Companies want a generalized but specialized person. So I'll tell you one of my example on one of the project that I was working on. It had like two front ends and one back end, one mobile application, one admin application, and one back end. Back end was in Node.js and ORM that we were using for that, and front end both were in Angular. So there were like six people in the beginning, and then I showed some interest in back end, front end. I started to pick up the things very quickly. धीरे धीरे they let other people go, but our companies was थोड़ा good, so they didn't fire those employees. Rather they gave them some good better opportunities. दूसरे प्रोजेक्ट में भेज दिया या कुछ और दे दिया, और मतलब एक बंदे पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी. So I was the only one for almost 1 year doing all backend database का issues I was solving, because it was a code first approach. Database में भी कुछ issues आते थे, writing the stored procedure, debugging वगैरह. Front end में भी there are two applications, so I was also looking into both the front ends, back end, सब कुछ. And then deployments, we used to write the pipelines, YML pipelines. It used to deploy in Azure DevOps. So managing the Azure resource groups, resource groups में बाकी सब चीज़ें भी होती है, application insights वगैरह, to log the errors, logging वगैरह, and then hibernate period, सब कुछ ये सब एक बंदे पे आ गया. And I was able to do that even before the AI has came in the picture. And now to yeah, everybody is like expected to do this specialized niche role, front end, back end, or UI developer, or like DevOps. ये सब जाने वाला है भाई. Yeah, nice. With AI and with backend and more platform skills, it's actually a decent time to be in the industry. For freshers or generalist roles, it's tough. Companies like Red and Razorpay are hiring, but people with any That skills is are why I'm looking. telling you guys, जो भी मेरे को पूछ रहा है ना कि किस चीज़ पे फोकस करें, आई एम टेलिंग यू as a fresher you should focus on creating a end-to-end full stack project where you will use a real database. Okay, where you should deploy that project on some server using Docker, and may not be the Kubernetes, but at least deploy it somewhere on the free instance of AWS or somewhere. So deploy that, uh, not for the interview or not for the company, but for you, because by doing so you will understand the whole process of what is going on. And once you get into some company, based on that, the your job will be just to do whatever you have done in a much professional way, much industrial specific way. So don't abide yourself into any specific. Collective, not running the large intake cycles that you saw in 2021, 2022. When I graduated, Razorpay came for on-campus placements, and this is like a very common thing for companies to do. I feel this will start to go. यानी 8 LPA job या 50 LPA job. In that range, company reduced their headcount by 20%. The founder tweeted that the business is strongest it's ever been, but I think it's a problem to be direct with what I'm seeing and why. What he said in the tweet was that it became obvious Yeah, that yeah, machine learning भी. at this point, if they had a lot of tech weight, or if systems were built in the way they were being built for the last thing around what I call the 100x call. The goal is 100x output. The roles required to build at the highest level are fundamentally different than what they were a year ago. Incremental improvements to existing systems won't get us there. This is an important point. A lot of systems were built by humans by hand and not by AI from scratch. A lot of times it might just be easier to rebuild a product. I think the Bun Zig to Rust migration is a good example of this. Bun migrated their full code base from Zig to Rust using AI in probably less than a week. And that tells you if a JavaScript runtime can migrate from one framework to another or one language to another in less than a week, any company's software, irrespective of how long it was built for, 5 years, 10 years, there may be a case to be made to build it from scratch using AI, write a lot of tests for it, and just make sure it's feature compatible with the current systems. That's exactly what he said. We need new systems. That means creating enough disruption to rebuild rather than iterate on what's already broken. I feel founders might have some level of sunken cost fallacy over here, where they might feel that they've spent a lot of energy, time, and in
I guess people are not still able to see the far away future that we are at. You know, people are still thinking ki all the jobs will go, AI will write all the code. You need to understand that currently almost 60-70% code in each repo, in each product of take any company, uska code almost 70% has become the AI written code, and I'll tell you that 70% code में से almost 30-40% code is not even seen by the developers completely. Like they didn't even understood what the AI has wrote, but they just saw कि it is working and they push the code due to the time constraints and all. And because all the code is now being AI generated, you know, there will be a point कि वो peak जाएगा 90%, almost 100% the code will be AI generated, and after that the models, new models will be training on mostly this AI generated code. So it's a loop will start to complete, you know. And after that the code quality will really start to degrade because nobody paid an attention, because right now the AI is writing the code, but there will be a time a loop will complete, and nobody will have the understanding of how this code is really working, but the code will be much more shittier than it was before. So don't think कि AI is writing good code. You have to see just now. अभी एक हम काम कर रहे थे, ठीक है, एक सिंपल सा काम कर रहे थे, आई शो यू कि इसने मैंने इसको बोला कि मेरे को ये करना है, इट बेस्ड completely based on your prompts. It gave me the initial in the filters itself. Okay, it gave me everything inside the filter, but I told him no, this is not the correct way. Make it these things into the service. These things should be in the service, this should be in these things should be in this. So then it started to go, okay, okay, now I understood. Now it gave us the split. Still we have to refine it and then use this rather than using it as it is. So these things are, it's similar data getting over by fuck electricity. Good night, Atharva. Good night, bro. I don't suggest the kid at your age should be awake by this time. So good night, bro. We'll see you tomorrow. It's similar to how automation and machines took over industries and took jobs, but never replaced humans, but made them adapt as engineers. अगर तुमने डार्विन्स थ्योरी और उसका वो बुक अगर पढ़ा होगा ना, सो दिस इज हाउ द ह्यूमन सिविलाइजेशंस इवॉल्व. यू नो, थिंक अबाउट कि जो भी नया each new generation comes up, invents a new set of inventions, new set of resources, and the newer generation's task is to get that last generation's inventions resources as a base and build on top of that. So now that AI is doing much of the task that it should have been done by the machines and all. So we'll get more time freed now. So तुम लोगों ने देखा होगा कि आजकल अब वो फ्री टाइम अपने को मिल रहा है, तो वो फ्री टाइम हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं? मोस्ट ऑफ द लोग हम तो रील स्क्रॉल करने में ही डाल रहे हैं, बट वी शुड यूज़ दैट टाइम. यू नो, अभी यही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है. मैंने कितना कोड लिखा है, बिल्कुल थोड़ा सा ही लिखा है, बट अगर यही मेरे को एआई के पहले लिखना होता तो मेरे को एक एक चीज़ गूगल करके देखना पड़ता कि क्या है, कैसे है, क्या फ़िल्टर है, क्या डिपेंडेंसी चाहिए. इतना फास्ट नहीं हो पाता, तो माई टाइम विल गेट फ्रीड. आई विल बी एबल टू डू मोर टास्क इन लेस नंबर ऑफ टाइम. So we need to utilize that time in somewhere good. We need to utilize this knowledge as well. There are lot many things. Processes अभी build हो रही है. We are in the era of changing world. So we'll see. Let's get back to this ना. थोड़ा सा तो progress कर लेते हैं यार इसमें. कुछ भी हमने एक filter बनाया, service बनाया. Guys, please do like the stream यार. I really want to see the number 15 on daily basis. सो हम क्या कर रहे थे, रेट लिमिट रिजल्ट. ओके, इसने ये किया, एक अलाउड वाला है, एक ब्लॉक्ड वाला है. ठीक है, अलाउड वाला और ब्लॉक वाला, वंस विच इज़ अलाउड, एंड देन नाउ कम्स टू द सर्विस. सी, इसने मेरे को बकेट बना के अभी भी नहीं दिया है.
दिया है इसने, बाद में दिया है उसने मेरे को बकेट बना के। सो ये बकेट समझ के लेना है। इस टोकन बकेट, उसमें कैपेसिटी है रिफिल पर सेकेंड। ओके, ओके, दिस इज व्हाट वी वांट। टोकन बकेट, ठीक है, लेट्स क्रिएट दिस टोकन बकेट। सो विल क्रिएट टोकन बकेट। कहाँ बना ले टोकन बकेट? विल क्रिएट अ पैकेज, विल क्रिएट algorithm, because we're gonna have many algorithms. So algorithm, and then in this one I'll create this token class, token bucket class. ठीक है, what are you saying? Treat ChatGPT as brainless idiot. He will not give what you didn't ask, and it doesn't mean, it doesn't have much memory as to remember your last message. So I prefer going to step by step through your project prompt. Yes, yes, that is what it is. हमारे प्रॉम्प्ट तुम्हारे एक्सपीरियंस पे बेस्ड हो गया, पता है? एक 20 साल का एक्सपीरियंस बंदा जितना अच्छे से प्रॉम्प्ट दे सकता है, वो कॉलेज वाला बंदा नहीं दे सकता है, बिकॉज ही डजंट हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. So the prompts of a college student will be much vague as compared to someone who has 20 years of experience. So ChatGPT and everything is like learning on steroids, but it's just the extension of you. It's just a tool, and it's up to you how good you will be able to use that. इसमें क्या क्या चाहिए अपने को? प्राइवेट फाइनल कैपेसिटी, प्राइवेट फाइनल इंट कैपेसिटी, और रेट रिफिल रेट पर सेकेंड. ठीक है, इसने रिफिल का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जो अपने पहले बना के दिया था. प्राइवेट डबल टोकन्स और प्राइवेट इन नॉट इंट डबल टोकन्स और प्राइवेट लॉन्ग लास्ट. yes, now let's constructor add. Okay, then what else we need? Getters and setters. No, there is this method, try consume और synchronized गेट रिमेनिंग. इसने बहुत सारी चीज़ें दी है. मेरे को लग रहा है आई शुड टेक अ पॉज ओवर हियर. हमने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर लिया है, सम चीज़ें पढ़ ली है, जो कि यही टास्क गोल था आज का, कि चीज़ें समझ लेना है, क्या इम्प्लीमेंट करना है. ये अगर मैं लिखते जाऊँगा ना तो कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा. आई शुड गेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट फर्स्ट, create a good pattern out of that, and then use the best way over here rather than just writing as it is over here. So rate limiter is something that limits your API calls for a user. As I'm assigned only 100 requests per day, I can't exceed that. Yes, correct, absolutely correct, absolutely correct. And there is a DDoS attack, you know, DDoS attack or DOS attack, denial of service attack. That means suppose you found तुमने कोई एक बैंक का API देख लिया फॉर एग्जांपल, और कूपन कोड दे रहा है वो, और यू सॉ कि वो कूपन कोड बहुत बार सेम एपीआई से तुम एलिजिबल हो, तो वो तुम्हें क्रिएट करके दे रहा है. तो तुम क्या करोगे? जाके जल्दी जल्दी वो कूपन रिडीम कर लोगे, क्योंकि ये मैंने किया है, मैं ये बोल रहा हूँ. जल्दी जल्दी कूपन रिडीम कर लोगे. तो मल्टीपल कूपन्स आ जाएंगे तुम्हें. एक ही कंडीशन ट्रू थी तब भी तुम्हें फॉर एग्जांपल एक एक हज़ार के 10 कूपन आ गए, तो वो लॉस हो गया ना सिस्टम का, बैंक का. तो वो अवॉइड करने के लिए देर आर रेट लिमिटर्स एंड एपीआई गेटवेज आर इन बिटवीन, कि कितने यूज़र हर एक. अभी इसमें लिखा ना कि हर एक एपीआई के लिए एक बकेट होगा, टोटल नंबर ऑफ बकेट्स.
इक्वल टू टोटल अवेलेबल एपीआई। तो फॉर दैट पर्टिकुलर एपीआई जो मैं अभी बता रहा था, उसका तो एक बकेट होगा, उसका कैपेसिटी कितना होगा, ओनली वन रिक्वेस्ट पर यूज़र पर क्लाइंट आईपी। मतलब एक ही मोबाइल से तुम एक ही वो एपीआई एक ही बार कॉल कर सकते हो, एक ही बार उसका रिस्पॉन्स आएगा, ख़त्म। उसके बाद तुम वो नहीं कर सकते एक्सेस, कभी भी नहीं कर सकते। तो उसका टाइम लिमिट इनफाइनाइट होगा, मतलब जब तक तुम फिर से एलिजिबल नहीं हो जाओगे तब तक वो फिर से नहीं आएगा। सो लाइक दैट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो इतना इतना काफ़ी है आज के लिए। ठीक है, अपने को भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और ये बकेट का भी आइडिया आ गया। तो आई जस्ट हैव टू फिगर आउट द परफेक्ट कोड फॉर दैट, द गुड पैटर्न, एज यू गाइज हैव फॉलोड मी on the JWT token project or URL shortener. I just don't write the code which is given. I try to find the standard and best way, best practices, industry practices that is been followed. So I try to get the simple form of code and use that, so that कभी भी कोई भी अगर उसको आके वो repo देखना है for system design का interview for practice or something, they can read it because I will make it too readable. ठीक है, so instead of going much into that, I'll take a pause over there. इसका वीडियो देख लेते हैं थोड़ा. to build the current systems. But I do agree. I think if the systems are not reshaped a bit or not built from scratch, mein, What to then learn? Let's see. He's saying what to deliver learn. on these roles. I think all of them are sort of, mildly important slash you will see hiring in these. Number one was the builder slash the tenants engineer. Unfortunately, not much has changed here. This is the normal engineer that you were. Plus, you need to be good with AI, more productive, and your fundamentals need to be really strong. It's as good as that. You probably need less syntax knowledge. You need more systems knowledge. Operating systems, concurrency, deploying projects at scale, scaling databases. देखो मैंने अभी यही समझाया, एआई और डेवऑप्स प्रोजेक्ट्स, सम रिकमेंडेशंस। एआई का मैं खुद कुछ नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद ज़्यादा काम नहीं किया, एक आध एजेंट बनाया हुआ है मैंने बस, उससे ज़्यादा नहीं पता है। तो डेवऑप्स प्रोजेक्ट्स तो एनी टाइम, end to end projects, full stack project, I'll say use everything in that. Write your own pipeline, automate GitHub flow, deploy it, and then you are ready to go. I'll suggest end to end project. Scaling backends, scaling See, he's frontends. suggesting what we should learn in this era. Anything and everything that your company might eventually hit where AI might not be as helpful is a mild bare minimum before you call yourself a 10x engineer. For a path as written, System design is there, bro. System design is there. System design is so fucking important in today's world now. We should know. Distributed system, system designs. down a few things. These are things that people sort of pick in super early. Most people that I know are already good in TypeScript and Python. They learn Go or Rust in system design the first 1 month. Idea is the most obvious thing to spend your time on right now because most probably a dire hire will happen in these companies. Only these companies would be super desperate to expand very fast compared to a web 2 company, a crypto company at this point. There's definitely a path to get into a finance company. There are a bunch of these in India. Some of them hire through us, and over there there's a probability starts 6 months to become a 10x engineer, and everything after that is pure interest slash a longer vision models, language models, take your pick. Probability let even go down this route. Now, one some full founding team of Cognition, I think, was really good in competitive programming, went into world finals, etc. This path will sort of probably not go away. It sets you apart compared Competitive programming will still be there, he's saying. to a bunch of other people. Even if you know none of this, but this very well, you probably can land yourself, in this builder 10x category, and you'll probably very naturally get there rather than trying to optimize for it. Think 100 times that I need to be a 10x engineer. You just land there if you're really good in competitive programming. The second one is the path called frontliners. I'm seeing this not very actively, but fairly actively. You might have heard of GTM or Pebble engineers. These are people who basically work with a third company. So if you're hired at OpenAI as a Pebble engineer, there's some probability you're working with, some startup in Minnesota and helping them integrate OpenAI into their system. Yeah, chat reply. Yes, this is the feature available. So yeah, so we are on the right path, compared to programming, lead code and all we are doing.
We have done little bit of tried little bit of competitive programming, but we have to be good at that, which I'm not right now. System design is one thing, that's for sure. If you are gonna go into a market, and if you know the system design even as a fresher, at least basic things, basic problems that I'm doing, the URL shortener, ये rate limiter हो गया, it makes a difference, you know. It makes a difference than the other candidates that will be there in the interview. Okay, you should be able to understand the systems very well at this moment. Okay, so I think I should end the stream, and do like the stream, guys, because I'll come tomorrow and I'll resume on these things. where diagram कहाँ गया? So ये पूरा ही मैं बना के rate limiter, I'll create the rate limiter. I'll use the API server as the URL shortener, the last project that I did, and I'll make some reparations to make a scenario where multiple requests can be raised within some given time limit, so that we can on stream show how the system is working. So it should actively block the request. So I'll make that complete testing system, and I'll show you guys how it's working, so you guys don't have to do, because system design is just you need to explain it in the interview. Interviewer will never ask you to write code or anything for system design. It is just all these things, you know. And the cherry on top is this book, uh, like this is how you need to answer. We need to answer like this. Is very well written in this book ki what kind of a questions we need to ask as a candidate, what kind of a rate limit are we going to design. So these questions interviewer will give the answers. We need to make the notes of it, and based on that everything and what we know, we have to answer the interviewer, and बस इंटरव्यू खुश हो जाएगा भाई, उसके बाद तो फिर जॉब। ठीक है, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली जॉब, दिस थिंग्स पता होना इज़ वेरी नाइस। तुम्हारा नॉलेज बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो इज़ वेरी गुड, यू नो, हाउ रियली द सिस्टम्स वर्क। रेट लिमिटर इज़ अ वेरी, वी वेंट थ्रू द हिस्ट्री कि वाई दिस डिनाइल ऑफ अटैक्स हैपन, कब कब कौन कौन से बड़े गिटहब अटैक हुआ 2018 में। हाँ, ये एक 2025 में रिसेंट वाला हमने जो देखा है माइक्रोसॉफ्ट एजर अटैक, डीडोस अटैक, बहुत ही बड़ा अटैक था। सो दिस बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स द थिंग्स लाइक रेट लिमिटर and other things exist. Yeah, bye bye guys, take care, and good night. Please do like the stream, so that I'll continue on this stream for like maybe next 2 or 3 days max, and I'll finish in like next 2 3 streams. After that I'll create a video out of that, and as a short video it takes time. Okay, वो वीडियो बनाने में टाइम लगेगा, क्योंकि URL शॉर्टनर का भी अभी मैंने बनाया नहीं है वीडियो, but you guys can follow and watch along here. Yeah, good night everyone. What he said, okay bye, I am gonna go with more arrays. हाँ हाँ, please please do, कल तुम confidence देखो। मैंने I have seen the change within you, अथर्व। कल yesterday you were like underconfident, and today you are like solving the questions. I wanna go and do the array questions and DSA. This is really nice energy. Fourth year TT, TT मेरे को नहीं पता ये क्या। May the moonlight shimmer through the darkness of your slumber. Good night, everyone. Yeah, let me end the poll. I hope you guys are following. You guys can text me on Instagram any day, because I tried Discord. Discord didn't work at all. You guys can text me on LinkedIn or Instagram. Instagram I feel okay, because I'm Instagram more ज़्यादा time Instagram पे होता हूँ. So 33% said yes. Yeah, that's nice. Where is my OBS? सो चलो गाइस, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू सून। मेरे को कल ऑफिस जाना है, तो मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता, मेरे को खाना खा के सोना भी है। सो मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।